Anthropology, LLB, and a Master in Mass Communication, along with a PhD in Hospitality from IGNOU. His career includes significant roles in hotel operations, management, and founding prestigious institutions like Federation of Hotel and Restaurant Association of India, Institute of Hospitality Management, Noida, and Banaradis Chandiwala Institute of Hotel Management, Delhi. Dr. Srivastava has also served as the Director and Controller of Examination at the National Council for Hotel Management and Catering. He was Principal at the Institute of Hotel Management, Srinagar and Kolkata, an alumnus of IHM Lucknow. Dr. Srivastava is also recognized for pioneering international collaborations in hospitality education. He was also instrumental in signing an agreement with Cornell Hotel School, New York, US, for faculty development on behalf of National Council for Hotel Management and Catering Technology. Dr. Srivastava has been honored by many awards. To name few prestigious awards like Times Icon Award 2024, Competition Success Review Awards for Excellence 2024, 31st Ashirwad Rajbhasa Puraskar 2023, Education Leadership Award from World HRD Congress and Best Principal by Ministry of Tourism for Skill Development twice. Today, we are privileged to have Dr. Nisheeth Srivastava with us, and I am certain his wealth of knowledge and experience will offer invaluable insights into the world of education. Please joining me in welcoming Dr. Nisheeth Srivastava. Welcome, sir. Okay. Thank you, Madhuri ma'am, and thank you for my introduction, Dr. Purushottam. I think I have got some input about the background of the students. So, and I feel food is something which attracts and interests everybody. So, without food, we don't survive. So, without adding much, let me start what the topic, and then I'll prefer more and more questions, because when we ask questions, we interact, then topic become very interesting. If only I am speaking and you are not responding, and that topic becomes very boring, and sometimes it becomes for the presenter also to sustain itself. So I'll start my screen share. Yes, share screen. All the participants, please mute yourselves. Isko. Gaurav sir, please mute everybody. इसको भी minimize किया. Please be attentive and you all can participate in the question and answer session. यहाँ पे मीटिंग यहाँ पे ये वाला. Yes. Hello. Hello. Ji sir. Is it visible? My screen is visible to you, ma'am? Not yet, sir. Not Okay, yet. okay. That's good. Yeah. Sir, we can see your screen now. Yes. Screen visible. Sorry. Yes, sir. Okay. मैं फिर से कर रहा हूँ मैम, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे. हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं. पहले प्रेजेंट करते थे. कौन सा? डॉक्टर. यहाँ से इसको मीटिंग में जाएंगे.
Yes. Now is it visible, ma'am? Yes, sir. Please, sir. Yes, sir? Yes, sir. Okay, ma'am. So, topic which I am starting today is culinary heritage and Indian knowledge system. Because for when we talk about food, we always have lots of queries, and we feel whatever we are doing today is the ultimate, but it has lots of background before it. So, नहीं हो रहा. Yeah. Okay. So let's start. See, our culture, as we all know, it is almost 5,000 year of our history. And when we talk about our history, it spans not only the Islamic era or the Maurya or this era, it goes much beyond with the evolution of human. And whenever the human started, that is why whatever I'm speaking and what is on the screen, there may be some variation, but I will purposefully doing it so that it create interest in you and you ask questions from me. Okay? Okay, all the participants, please respond. Yes, sir. Hello. Sure, sir. Sure, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, fine. So when you see the first topic, that is uncovering 5,000 years of Indian culinary history. So 5,000 years, because when we are talking about 5,000 year, it is basically that time our food was influenced by Ayurveda. Ayurveda came later, but the food started much earlier. So if you read the old stories and other things like कहते हैं संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए आई या कहीं है, तो every booty and everything whatever the we generated in the forest, that was our food too, as well as it had lots of medicinal value, and that is why our food started from the early era, and it is always a medicinal food at that time, and that is why I said it is deeply influenced by the Ayurveda. The ancient system of medicine, Ayurveda viewed as the food as a primary means of maintaining health and harmony, because that time medicines were not there like today we are having diabetes है, ये लो blood sugar है, sorry, blood pressure है, तो ये वाली medicine. That time everything was being cured with the food only. That is why lots of research was doing accidentally or experimentally or knowingly. It is all research was going to us because the food was first thing for important for the survival. And that is why the concept of sattvic food that emphasized purity, nourishment, and balance became central point for the diet. Because earlier, if we all know that earlier time when we talk about Ramapithecus and Australopithecus era of in anthropology, that time the or Stone Age, so everything was like a tribal we were living, and whatever we are getting we were eating. But slowly when settled down that the Yuva came into existence and we started settling down, then first thing went on the research of the food, because food was part of everybody's life and very important part for the survival. Then it came the existence of herbs and spices, right? That is why कहते हैं, for herb and spices were not being used only as a flavor, it was more for the medicinal value. And अगर आपने पहले देखा हो कि पुराने समय के वैद्य लोग जब भी कुछ होता था कि ये पेस्ट लगा दो, वो इसको पत्तियों को पीस के लगा दो या काढ़ा बना दो, आज भी हमारे घरों में अगर कफ वगैरह हो जाता है तुरंत कहते हैं इसको शहद पीपर चटा दो, या इसके लिए अदरक का काढ़ा बना दो, या अदरक की चाय तो one of the very common it happens. So it is not that it started now, chai started later, but the kadha and all these paste were part of the culture since that Ayurveda era to Maurya and Gupta empires, right? Maurya and Gupta and all, they almost covered our whole लाइक बृहद भारत जिसको हम कहते हैं, अफगानिस्तान तक वो लोग रूल कर रहे थे, और उनके पास
तो हर जगह एज पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फूड इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हम जहाँ भी होते हैं वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से अपने खाने का सृजन करते हैं. सो दैट इज वाई द मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर की जब था, प्लस शैवाइट से वैष्णवाइट एंड वैष्णवाइट से बौद्धिज्म का ट्रांजिशन पीरियड भी था. तो उस पीरियड में हम बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो भी जगह जगह से आते थे, और इंडिया वाज वेरी वेल नोन फॉर द ट्रेडिंग टू. दैट इज व्हाई द फूड had lots of influences, and it became much a part of a culture, a history, and very important. That period, if you see, that I said कि Shaivites to Vaishnavite, the Vaishnavite food was more towards the vegetarian side, and so all this research or development, I will say research because I am talking about cuisine, but in common friend, the transition of food took place during this period. Is so more refined with a growing emphasis on elaborate meal preparations, because when people started having more money through trading, through agriculture, their meal become more sumptuous and more elaborate. That was the time the royal courts came into existence, parties, hosting togetherness came into, and more important, the feast things came into existence during that period, because that time we used to celebrate different victories, different festivals, and after that, when invaders started coming to India, when our rulers, Maurya Gupta, after Gupta dynasty, rulers became little weak. Then the invaders started coming in, and as we know that उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा या इस मंदिर को लूटा. But basically, when they all came, they brought the influence of the food too, because they came from the Middle East, and their food was not having that much use of spices. It was more vinegar, lemon, and because their desert area, lots of greens, vegetables were not being used in their cuisine. So when they came to India, the food started developing in a different form, because the Middle Eastern food and Indian food, whatever was existing of Gupta dynasty, जिसको मारवाड़ी फूड भी कह सकते हैं, वो दोनों का जब मिलन हुआ तो हमारा एक नया cuisine शुरू हुआ. एक जैसे इस्लामिक इन्फ्लुएंस की जब बात आती है तो एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे आती है कि हाउ द मुगल क्विजीन केम. तो जब बाबर आया, बाकी तो जो तैमूर लंग वगैरह जितने आए वो आए, लूटे और चले गए. बट व्हेन बाबर केम विद द पर्पस टू सेटल इन इंडिया. सो उसने जब यमुना किनारे अपना पूरे बस्ती बसाई और सेट हुआ, तो उसके सिपाहियों को यमुना का पानी जो था वो सूट नहीं करता था, बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे. तो जो उनके साथ लश्कर के साथ, आर्मी के साथ जो वैद्य हकीम चलते थे, उन हकीमों ने कहा कि इसका इलाज तो यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स के वैद्य हैं, जो लोकल कम्युनिटी के वैद्य हैं, वही कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम समझ नहीं पा रहे. देन उस समय बनारस से आयुर्वेद के जो विद्वान लोग थे, उनको बाबर ने बुलाया, समन किया, और उनसे कहा कि हमारे सेना के लोगों का आप इलाज कीजिए. तो उन्होंने जो कहते हैं मिडल ईस्टर्न फूड था, जिसके अंदर मसालों का इस्तेमाल न के बराबर होता था, वहाँ पे स्याजीरा एंड हल्दी, इस धनिया, बहुत सी चीज़ों के स्पाइसेस करके क्विजीन डेवलप किया, जिसको आज की डेट में हम मुगल क्विजीन कहते हैं. लेकिन कहते हैं वो लोगों के जो उनका था खाने से, जो उनकी बीमारियां थी वो तो ठीक हुई, लेकिन साथ ही एक और बीमारी शुरू हो गई, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, या पेट में उनको हैवीनेस महसूस होने लगा. तो काउंटर दैट, हम यहाँ पे देसी घी, क्योंकि हम लोग उस समय देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, घी और तेल का, जो कि मिडल ईस्टर्न क्विजीन में नहीं होता था, तो उसको ऐड किया जाने लगा फॉर एज अ लुब्रिकेशन इन द फूड. एंड मुगलाई क्विजीन, जो आज की डेट में हम कहते हैं यार इतना तेल है इसमें कैसे खाएं, पर वो दैट टाइम दैट ऑयल वाज यूज्ड एज अ मेडिसिनल वैल्यू, हैड द मेडिसिनल वैल्यू फॉर द पीपल. एंड कहते हैं वो मुगल क्विजीन वहां से शुरू हुई. और वही मुगल क्विजीन जो जब जैसे जैसे दिस मुगल एम्परर्स स्टार्टेड विनिंग द पार्ट,
they used to send their army, and the army stable there, or their subedar or some nawab was made out there. तो वो जहाँ पे गए वहाँ का जो लोकल इन्फ्लुएंस फूड था वो भी उसमें आ गया, जिसकी वजह से हम आज की डेट में जो हम कहते हैं मुर्शिदाबादी क्विजीन, जूनागढ़ी क्विजीन, अवधी क्विजीन, हैदराबादी क्विजीन, so all these are offshoot of the basic Mughlai cuisine which were developed after Gupta dynasty in India and traveled as the warriors or the army traveled to different part of India to invade it. That is how we progress. And then if we talk about different regional diversity, as I was talking about food, like Mughlai cuisine, when it traveled to different part of India, जहाँ जहाँ पे जैसे कि वो बंगाल की तरफ गए तो वहाँ पे मुर्शिदाबाद एरिया आ गया, गुजरात की ओर आए तो जूनागढ़ हो गया, साउथ में गए तो हैदराबाद हो गया, और इसी तरीके से टीपू सुल्तान जब आया तो उधर कर्नाटक का जो खाना है वो डेवलप हुआ। तो ये जो रीजनल इन्फ्लुएंसेस थे, ये बेसिकली वहाँ पे जो अवेलेबल स्पाइसेस और स्टेपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उनकी वजह से वो इन्फ्लुएंस उस बेसिक क्विजीन पे आया, और वो जगह जगह के वो क्विजीन डेवलप हुए जिनको आज हम कहते हैं। सो ये कहने का फोकस यहाँ पे है कि फूड ऑलवेज traveled and showcase the culture and diversity, not of the product but of different cultures and adoption of different culture in itself. That is why I said a culinary mosaic. When we talk about culinary mosaic, if you see the geography of created wide range of regional cuisine, each cuisine unique and had a different flavor, especially when we talk about northern India only. If you see northern India में पंजाबी खाना है तो बिहारी खाना है, तो यूपी का है, राजस्थान का है, एमपी का है। अगर एमपी के दाल बाफले हैं तो वहाँ का दाल बाटी चूरमा हो गया राजस्थान का, एंड दे हैव अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ देयर ओन रीजन्स। और बहुत सी जगह जैसे जो हमारे डेजर्ट्स एरिया हैं जहाँ पे चावल या आटा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, दे यूज लॉट्स ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स, स्पेशली द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, food of rice and wheat, but their staple food is more on towards the millets. So that is very, very important we talk about. You see, if we look at the coastal side, seafood, fish is one of the very prominent item in their thali or their staple food of every day. So that is why I said culinary mosaic, because the regional influences created so much variations in our food. It looks like a mosaic and it gives a different interest. Like when we travel to, for example, we travel to Goa, we try to use their Konkani food or Portuguese influenced food. The same way, if we travel to Kashmir, we look for Wazwan. Though Wazwan and Kashmiri Wazwan is different into Pandit Wazwan and Muslim Wazwan. And very distinct feature is कि Pandit Wazwan does not use shallots, onions. They उनकी सारी टेम्परिंग हींग पे होती है, एस्फोटिडा से होती है, जो कि कश्मीरी Muslims don't use. So there are certain nitty-gritties in each cuisine also as per the influence of the religion too. And that too after Islamic कहते हैं the old Hindu culture and Islamic influence came into the existence. So when we come towards more modern area which we talk about today, again our food has become more of fusion food. Things the food of different people, different culture. That is why
वी से ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन अवर फूड। एंड आज की डेट में हम ट्रेडिशन में गणेश चतुर्थी के समय महाराष्ट्रियन थाली और ओणम के समय केरला थाली की बात करते हैं, एथनिक केरला थाली की। एट द सेम टाइम ऑन अदर डे वी वांट टू ट्राई टू थाई क्विजीन, तो मलेशियन क्विजीन, टू पिज़्ज़ा एंड बर्गर इज nowadays household name, and all the young generation चलो पिज्जा खा के आते हैं। इट्स वन ऑफ द लाइक चाट खाना was once a time the same way, that is the influence of our global influence on our food because of our travel. So in other word, if we say the food is part of the culture, आई एम नॉट सेइंग कि मॉडर्न इन्फ्लुएंस है तो नहीं, लेकिन जहाँ पे कल्चर की बात होती है, हम जब भी किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब भी हम कहीं साथ होते हैं, तो हमेशा पहली चीज होती है क्या बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर छठ की पूजा बिहार में होने जा रही है, तो सबसे पहले वो ठेकुआ के शुरू के, क्योंकि छठ आने वाला है, is came into the picture. So each celebrations related with some sweet, some food, and that becomes one of the essential food of that celebration. Though कहते हैं we have got lots of influence, international influence, Islamic influence, British influence, English influence, all the invaders left their influence of our food. So why I'm talking about these influences have not deterred us with our own cultural food. एंड इसीलिए जो हमारा ये पूरा मोज़ेक है, जिसके अंदर कि हम ट्रेडिशनल फूड को भी रखे हैं और मॉडर्न फूड और इंटरनेशनल फूड, सो इट इज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरल सेलिब्रेशन, बिकॉज जब कल्चर होता है, सेलिब्रेट हम करते हैं, वी इनवाइट लॉट्स ऑफ गेस्ट एट अवर होम, and when we are inviting the guest at our home, the food diplomacy automatically comes in. जैसे कि बात हम करते हैं कश्मीरी वाजवान को ऐसे एग्जांपल की तरह मैं लेता हूँ, तो नूरजहां जो थी, शी वाज अ ट्रेड वुमेन, वो गुलाब जल बनाती थी, गुलाब के इत्र बनाती थी, वो कश्मीर में ही रहती थी, झरोखा बाग उसके पैलेस का नाम था, और शी यूज टू होस्ट ऑल द ट्रेडर्स देयर। और जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग टॉक्स होती थी, वो जनरली इवनिंग में हुआ करती थी विथ इलोबरेट मील्स। सो इट वाज अ काइंड ऑफ शो केसिंग कि आप क्या प्रेजेंट कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसी के समय सारी फूड के ऊपर ही सारी डिप्लोमेसी एंड ट्रेडिंग यूज टू टेक प्लेस। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह ने नवाबी सजाउद्दौला को लखनऊ का नवाब बनाया था, तो वहां पे वो एक बार उनसे मिलने गए, तो उनके खानसामे ने, लखनऊ के जो नवाब थे सजाउद्दौला, उनके खानसामे ने इतनी डिशेस बनाई, लेकिन जो डिश देखने में नमकीन होती थी वो खाने में मीठी होती थी, और जो मीठी लगती थी वो खाने में नमकीन होती थी। बादशाह को बहुत बुरा लगा, और जब वो कि भाई वो जिस चीज को उठाते थे उनके स्वाद के अनुरूप नहीं होता था, और वो उसको छोड़ दिया करते थे, तो एक तरीके से वो भूखे ही रह गए। तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो जब आए, उन्होंने वहां के साधु को बुलाया अपने यहाँ, और अपने खानसामों को बोला कि ऐसी ऐसी चीजें बनाओ जो कि उसने कभी देखी नहीं हो। और तब कहते हैं एक मिठाई अशर्फी, जो कि बिल्कुल गोल्ड कॉइन के शेप में बनती थी, अशर्फी करके एक मिठाई, उसका आया, और उन्होंने जो डिशेस बनाई, बादशाह उसको देख के जो नवाब सादतौला थे वो देख के ही रह गए कि नहीं, इसको मैं खाऊं कैसे, कहाँ से शुरू करूं, और वो भी भूखे लौट आए। तो इस तरह की छोटी छोटी सी स्टोरीज थी, इवोल्यूशन थे, जो कि हमारे क्विजीन में डिप्लोमेसी से आए, कि एक दूसरे को नीचा भी दिखाते थे, और एक दूसरे को अगर देखे तो जब जहाँ को मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पे उन्होंने बगनखा का इस्तेमाल किया, तो वो भी फूड डिप्लोमेसी पे, खाने पे ही बुलाया था। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अवर फूड कल्चर, जो कि हम कभी नहीं करते। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि और जब भी व्हेन आई टॉक टू माय स्टूडेंट, आई से कि हॉस्पिटैलिटी इज अ प्रोफेशन जो कि आपके साथ बर्थ से लेके डेथ तक आपके साथ ही होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम मिठाइयाँ बनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं,
जब कहते हैं शादी होती है, घर में कुछ भी होता है, तभी फूड। तो ये जो है कल्चरल सेलिब्रेशंस भी हैं, एस एस फूड डिप्लोमेसी भी है, कि बारात में जब आप खाना बनाते हैं तो बेसिकली आप, लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों को शो ऑफ कर रहे होते हैं, लड़के वाले लड़की वालों के, एंड दे आर कमिंग टुगेदर, बट एट द सेम टाइम इट इज द स्प्रेड ऑल्सो showcase to the how the person is presenting himself. So it is basically a presentation of other side. So that is why I said, and the same way when last rituals take place of any, then again कहते हैं भोग और जो last rituals होते हैं सबका खाना, तो jump to death, food is always part of it, and that is why we are talking about the cultural celebrations and food diplomacy. And further, if I come, so total influence, if फूड हिस्ट्री एंड आर्यन इन्फ्लुएंस, आई सेड कि जब शुरुआत हुई तो हम अपने डेवलपमेंट में जो हमारा ह्यूमन, एप से ह्यूमन तक का डिप्लोमेसी, वो डार्विन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हुआ, तो वो भी कहते हैं कल्चर में ये कि आर्यंस अपने आप को सुपर मानते हैं, बिकॉज दे वेर मोर पॉलिश्ड इन प्रेजेंटिंग देयर फूड एंड लिटरेचर एंड कल्चर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा और मैं चाहूंगा कि कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछो, आस्क सम क्वेश्चंस सो दैट आई कैन गो फर्दर फॉर फॉरेन इन्फ्लुएंस, जब इंग्लिश और ब्रिटिशर्स आए और तब हमारे फूड में क्या फर्क आया। आई थिंक अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि कुछ मैं इंटरेक्टिव सेशन लग रहा हूँ, नहीं तो अभी ऐसे लग रहा है मैं मोनोलॉग कर रहा हूँ। सर रीजनल फूड का और जो मतलब उसका उसका रिलेशन आपने अच्छे से बताया, वो कुछ और एग्जांपल बताइए तो फिर और समझ में आ जाएगा। आपने कश्मीर वाला बताया और दो चार एग्जांपल अच्छे बताए आपने। सर मैं आपसे एक ऐसे कहता हूँ कि हम्म, आप, एक डिश है सांभर, सांभर ले लीजिए, हाँ जी, और हाँ जी। ठीक है, आप केरला से लेके महाराष्ट्र तक हर कोस्टल बेल्ट में केरला का सांभर, तमिलनाडु का सांभर, आंध्र प्रदेश का सांभर, कर्नाटका का सांभर, एंड महाराष्ट्र में सांभर, इफ यू सी द टेस्ट, it is varies with the influence of spices of that region. महाराष्ट्र में जो सांभर बनता है, दे यूज लिटिल जैगरी इन इट, थोड़ा सा मीठा होता है। और जैसे Yes, जैसे आप केरला की ओर जाते जाते हैं, वहां पे काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा होता है, काली मिर्च और इमली का, तो खट्टा और तीखा ज्यादा होता है। तो yes, इसीलिए मैंने एक डिश को लिया कि आप कहते हैं रेस्टोरेंट में जब ऑर्डर करते हैं, एक जैसे आपने मसाला डोसा ऑर्डर किया और उसके साथ जो सांभर आ रहा है, उसके वेरिएशन से आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो कुक है ये किस रीजन से है। महाराष्ट्र में आप कहीं भी इस सांभर महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट में खाएंगे, हल्का सा मीठा आएगा, लेकिन वही अगर आप तमिल रेस्टोरेंट का मुंबई में ही खाएंगे, तब वो सांभर थोड़ा सा खट्टा या थोड़ा तीखा आपको लगेगा। तो यही रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि आप रोज करते हैं पर हम उसको एक्चुअल में रियलाइज नहीं करते हैं। yes, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बिहार का लिट्टी चोखा। भी झारखंड में भी लिट्टी चोखा बनता है, बिहार में भी लिट्टी चोखा बनता है, और वही एमपी में जब हम आते हैं तो दाल बाफले, और जब राजस्थान में जाते हैं तो वहां पे दाल बाटी चूरमा, सेम थिंग वेरीज, बिकॉज कहते हैं उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। लिट्टी के साथ चोखा जो आपका झारखंड में है, और लिट्टी के साथ जो चोखा उसका लहसुन की चटनी करके बिहार में है। दाल बाफले जब एमपी में आते हैं तो स्टीम करके दाल के साथ सर्व करते हैं, वही दाल ज्यादा स्पाइसी होकर दाल बाटी चूरमा राजस्थान में जाती है। तो सेम बाटी सेम लिट्टी वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन with different influence of food. I hope I replied your question, sir. yes, sir. Yes, sir. Getting it. Very good But afternoon, sir, sir. My name is very good afternoon, sir. My name is Dr. Gangu from Andhra Pradesh. Yes, sir. Sir, I have one question. That Yes, is, sir. like, how can IKS help in designing sustainable food entrepreneurship model for tribal and rural communities, sir?
That question I will take later on because आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की है ट्राइबल फूड की, तो उसके ऊपर एक अगर मैं बीच में करूंगा तो ये स्ट्रीम रुक जाएगा। बट बेसिकली जो ट्राइबल फूड है सस्टेनेबिलिटी मॉडल के लिए अगर आप देखें तो झारखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया हुआ है और उन्होंने बकायदा ट्राइबल फूड का दे शोकेस डिफरेंट फेस्टिवल्स इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। आई एम नॉट एबल टू शो द वीडियो, आई हैव अ वीडियो जिसमें पूरे ट्राइबल फूड और उनके कल्चर और रिचुअल्स के साथ जब आप फूड फेस्टिवल्स करते हैं, यू मेक पीपल अवेयर। इफ यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश तो लंबाडी Yes. पीपल Yes, आर sir. देयर। Yes, sir. In Andhra, this side also, South, Pongal, Onam, Makar Sankranti, these are all we या celebrate. Sir. हाँ, बट फूड इज लिटिल डिफरेंट सर। Sir, हेलो। it connected to a traditional food knowledge system, sir. Actually, how we prepare. Makar Sankranti not only celebrating, sir, and preparing different food items. Yes. When I was talking about food and cultural celebrations, I was mentioning that only. The same Ugadi, if I talk about Ugadi, if I talk about Pongal, food is there, diet, same staple items are there, but the food is different. The dishes are different. Am I right, sir? Yes, Sir, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उगाड़ी Yes, sir. एंड पोंगल आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। अब वही चावल है, वही दाल है, लेकिन आपकी जो डिशेस है वो बदल जाती हैं। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना, राइट। और और जब आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके बारे में सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्राइबल क्विजीन एंड कल्चर ऑफ फूड, ये एक तरीके से बहुत ही डिटेल में है और इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट रियली काम कर रही है। जैसे मैंने झारखंड कहा, छत्तीसगढ़ कहा, आप कभी रायपुर या रांची की ओर जाएं तो आपको दिखेगा। लेकिन यस, आंध्रा तेलंगाना में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बनने की वजह से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया है, खासकर मेडक और करीमनगर की साइड अगर हम जाते हैं तो। ठीक है Yes, सर। sir. yes, Sir, do sir. you know Andhra Pradesh, sir? You're talking about Karimnagar. या आई वाज Very- जनरल मैनेजर ऑफ होटल भास्करा पैलेस इन हैदराबाद Oh, 1995। सो so nice of you, sir. Thank you. थैंक यू सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन सर? हेलो। No, sir. No, sir. Please No? proceed. Okay. So, okay, I'm going ahead with foreign influence on Indian cuisine. And when we talk about foreign cuisine, सभी लोग जानते हैं कि गोवा में पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस रहा या फ्रेंच कॉलोनी रही, तो उनके लेकिन कहते हैं ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 300 years. So, and they started from West Bengal. Calcutta was the first city developed by them. तो अगर कलकत्ता में आप पार्क स्ट्रीट वगैरह देखें तो उस समय वो पूरा कल्चर ही ब्रिटिश था और वहाँ का जो खाना था वो बहुत ही एंग्लो इंडियन फूड डेवलप हुआ, जो कि जिसके अंदर बहुत से बेकरी प्रोडक्ट्स ऐड हुए, जो कि बेकरी जो थी वो इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होती थी। जब मुगल एम्परर्स थ्रू पंजाब आए थे तो पंजाब में वो जो तंदूर का कंसेप्ट था, सांझा चूल्हा का कंसेप्ट था, वो था। पर बेकिंग वाज नेवर पार्ट ऑफ अवर इंडियन क्विजीन, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये रहता था कि खाना जितना ताजा हो, ताजा बने और ताजा खत्म हो जाए। टू मेक एंड स्टोर वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कल्चर। और ये कल्चर इसलिए भी था कि अगर हम अपने कल्चर को देखें तो जैसे कि लड़कियां जब शादी के बाद विदा होती थी या घर से भी जब लेडीज विदा होती थी तो उनको कच्चा चावल बांध के देते, जैसे जैसे बिहार यूपी की साइड में खोइछा कहते थे या कुछ कहते, क्योंकि चावल ये होता था कि उन्हें कहीं दूध या किसी भी गांव में रुकेंगी तो दूध भी मिल जाएगा या पानी मिल जाएगा, तो उसमें मिट्टी के बर्तन भी मिल जाएंगे कुम्हार से, तो वो पका के आराम से खा के रास्ते में निकल सकते हैं। दैट वाज द कंसेप्ट। बंगाल के लोग जब भी ट्रेवल करने जाते थे तो हमेशा लाई मूड़ा साथ में लेके चलते थे कि कहीं भी मिले तो खा के पानी पियो। सो ट्रेवल फूड भी हमारे यहाँ इस तरीके से होता था। तो बेकिंग का कंसेप्ट की चल रहे हैं तो ब्रेड सैंडविचेस या कुकीज का कंसेप्ट उस समय इंडिया में नहीं था। जब ब्रिटिशर्स सेट हुए तो उन्होंने अपने यहाँ जो हाई टी का कंसेप्ट था, क्योंकि उनकी मीटिंग्स वगैरह हाई टी और डिनर्स पे ज़्यादा होती थी, तब वो कंसेप्ट हाई टी का आया, जिसके साथ स्नैक्स में सैंडविचेस, पैटीज एंड आपके पेस्ट्रीज
एंड केक्स, फूड केक्स वगैरह ऐड हुए। एंड स्लोली जितने भी डिश थे, सिंस दे वर नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, तो हमारे यहाँ जो भी अवेलेबल होता था वो डाल के स्पाइस बनाते थे। इसी में मुझे एक छोटी सी स्टोरी और याद आ रही है, लखनऊ से दमपुख्त क्विजीन से रिलेटेड है। वो भी नवाबों के समय का ही है। तो जब बड़ा इमाम कहते हैं, एक बार लखनऊ में बहुत बड़ा फेमाइन हुआ और भूखमरी की नौबत आ गई, तो सारे लोग इकट्ठा होकर महल के सामने रोना शुरू किए। तो उस समय जो नवाब थे, नवाब की बेगम साहिब बाहर आई कि लोग क्यों रो रहे हैं। तो बताया गया कि भाई भुखमरी है, सारा काल पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो लोग पूड़ी हलवा भी नहीं खा सकते। सो पीपल स्टार्टेड क्राइंग, पूड़ी हलवा कि हम तो रोटी भी नहीं खा सकते। तो बेगम साहिबा ने बोला अपने जो भी वजीर थे उनको कि भाई हमारी गुड़ियों का दहेज का इतना रुपया रखा हुआ है, इन लोगों को आप खाना खिला दीजिए। तो नवाब साहब को पता चला। नवाब साहब ने बोला कि भाई अगर मैं लोगों को ऐसे ही खाना देने लगूंगा तो लोग सारे के सारे कामचोर हो जाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे खाना मिलेगा। तो उन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ का है वो बनवाना शुरू किया। तो दिन में लोग बनाते थे और रात में औरतें तोड़ती थी, जिससे कि दोनों को खाना मिलता रहे। और उस समय खाने के लिए जो भी होता था सारा सामान एक हांडी में डाल के, चूंकि गर्मी थी और फेमाइन पड़ा हुआ था, तो उस रेत में दबा दिया जाता था। दिन भर की गर्मी से वो पक जाता था और रात को लोग वही खाते थे। दे वर ईटिंग ओनली ट्वाइस अ डे, एक बार अर्ली मॉर्निंग, एक बार नाइट। तो एक बार नवाब साहब काम देखने के लिए आए और उस समय खाने का समय हो गया था, डिश खुली, उनको बड़ी अच्छी महक आई। तो उन्होंने बोला ये तो मेरे महल में भी बनना चाहिए। और तब फिर दमपुख्त क्विजीन, क्योंकि दम की धूप में पूरे दिन पका हुआ दम, और पुख्त मीन्स पक्का, यानी पक चुका है। तो दमपुख्त क्विजीन का डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ। तो इसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स आ गए और वो रूल करने लगे, तो वहाँ भी बहुत से जगह जब नवाबों के यहाँ जाते थे टू प्लीज जो नवाब, क्योंकि उनको अपने ब्रिटिशर्स को टैक्स देना होता था, उनको खुश रखना होता था, तो वो अपने किचन में अंग्रेजों की पसंद के खाना बनवाना शुरू किया। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड था, जो राजा के घर का या नवाबों के घर का, उसके अंदर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया। और स्पेशली द डेजर्ट पार्ट, जहाँ पे पुडिंग्स एंड ब्रेकफास्ट में या इस इवनिंग टी में पैटीज, पेस्ट्रीज एंड केक्स का चलन शुरू हुआ। ये इस तरीके से अगर हम कहें तो इंडियन क्विजीन पे ये जितने भी इन्वेडर्स आए, चाहे इस्लामिक पीरियड रहा या ब्रिटिश पीरियड रहा, हमारे खाने के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन हमारे खाने का जो मूल कारण था, जो मूल बेसिक वैल्यूज थी, वो हमेशा से आयुर्वेद से रिलेटेड रही। आज भी हमारे किचन में दादी नानी जो है, कुछ भी तबीयत खराब हो जाए, क्या दादी नानी के आज की डेट में मदर्स भी, कि इसको हींग पिला दो, तो इसको अजवाइन दे दो, तो ये, तो वो और आज की डेट में तो व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा वीडियो आने लगे हैं, कभी कभी लगता है कि सारी की सारी आयुर्वेद जो है व्हाट्सएप मैसेज में ही पढ़ाई जा रही है। सो दैट इज हाउ, तो इसीलिए अब मैं आया हूँ पावर ऑफ स्पाइसेस पे। तो अगर आप देखें तो स्पाइसेस नॉट ओनली द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ द फूड, दे वेर बेसिक ट्रेडिंग प्रोडक्ट इंटरनेशनली। और केरला की साइड से तो सबसे ज्यादा काली मिर्च का और छोटी इलायची का ट्रेड होता था, और सबसे ज्यादा पैसे भी इन्हीं प्रोडक्ट से आते थे। तो अगर देखें हम 5,000 के साल की बात कर रहे हैं, जबकि ये मसाले वगैरह उससे पहले भी इस्तेमाल होते थे। लेकिन ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 3,000 ईयर्स बैक शुरू हुई थी इंडिया से। इसकी वजह से हम अपने फूड को जितना स्पाइस करते हैं उतना ही, यही इसी बात है कि इतनी इन्फ्लुएंसेस के बाद भी हमारा जो बेसिक करेक्टर ऑफ द इंडियन क्यूजीन है, इंडियन फूड है, वो आज भी एज इट इज कर रहा है। और सेलिब्रेशन एंड फूड तो हम आपसे अभी पहले थोड़ी ही बात कर चुके हैं। तो इसलिए रीजनल क्यूलिनरी ट्रेडिशंस ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया पे बात करते हैं। अगर आप देखें, बंगाली क्विजीन फीचर्स मल्टी कोर्स मील्स, फिश कुक्ड विथ मस्टर्ड, स्वीट्स लाइक रसगुल्ला। उड़िया Assamese cuisine focus more on seafood and seasonal produce। अब आप भी बात हो रही थी रीजनल इन्फ्लुएंस की, तो उसी में एक और डिश जैसे कि बंगाल में
हम चावल और उबले आलू को मिक्स करके घी भात खाते हैं। वही अगर हम आसाम में जाते हैं तो वहाँ भी ब्रेकफास्ट की मेन डिश यही है। उसको और आसाम में सॉरी उड़ीसा में पंथा भात कहते हैं, घी भात। और वहाँ पे मैं नाम बोल रहा हूँ आसाम में, लेकिन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट इज बॉइल्ड पोटैटो विथ राइस। बॉइल्ड राइस, जनरली वो रात का राइस होता है, और उसमें घी या मस्टर्ड ऑयल डाल के, सॉल्ट डाल के, दैट इज देयर स्टेपल ब्रेकफास्ट। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, तो दाल बाटी चूरमा जैसे हमने किया, गुजराती फूड, स्वीट्स। अगर मैं स्वीट्स की बात नहीं करूं तो हम किसी भी रीजन के खाने को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वीट हमारे यहाँ का स्पेशल रहता है। स्पेशली स्वीट यूज टू गिव द एनर्जी टू द पीपल बिफोर एंड आफ्टर टू। अगर मैं उसके बात करूंगा उसके इम्पैक्ट की, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय जाएगा। लेकिन ऐसे में सिर्फ खाने के सर्विस में, जैसे आप अगर राजस्थान में जा रहे हैं तो जैसे आप बैठेंगे, स्पेशली घी बूरा विल बी सर्व टू यू, and then food, and after food again the sweet dish something will be served. Bengal also, the sweet starts and sweet is finished. मारवाड़ी क्विजीन में जितने डिशेस आपकी कहते हैं डिस्प्ले थाली में होती है, उससे ज़्यादा ही स्वीट का डिस्प्ले होता है। तो ये स्वीट जो है, अगर आप देखें नॉर्थ और साउथ में बिल्कुल अलग अलग से स्वीट है। साउथ में मिल्क प्रोडक्ट वाले स्वीट कम है, राइस एंड ग्रेन्स वाले स्वीट्स ज़्यादा बनते हैं। जबकि बंगाल के साइड हम जो मिल्क प्रोडक्ट वाले स्वीट्स हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। गोवन क्विजीन की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम स्वीट वगैरह पे हमारा फोकस पोर्चुगीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट कल्चर आ जाता है। और मैं इससे थोड़ा सा कहते हैं ज़्यादा आगे बढ़ना चाहूँगा। यस, क्या ये नॉलेज सिस्टम की, हम फूड एंड नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे थे, तो फूड के बारे में तो मैंने बहुत बात कर ली, लेकिन ये आए कहाँ से, इनको हमने प्रिजर्व कैसे किया, कहाँ से किया? तो अगर देखें तो हमारे एशियन टेक्स्ट में, वेदों में सबसे पहले खानों का जिक्र हुआ है। और एक राइटर हैं मिस्टर डॉक्टर के टी अछिया, उनकी इंडियन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्विजीन करके किताब है, उसमें उन्होंने वेदों के समय से पूरा के सबसे पहले सॉलिड ग्रेन्स होते थे जो कि जंगल में खुद जल जाते थे और उसको बिन के खाते थे, से लेके हम ग्राइंड करके सबसे पहले डिश हमने वड़ा बनाना सीखा, जो कि साउथ इंडियन में बहुत फेमस है। दाल वड़ा या आप मेदू वड़ा जो भी कहें। और वही बड़ा आप नॉर्थ में आते हैं तो दही बड़ा है, या उड़िया में आए तो दही बड़ा आलू दम। तो बड़ा वॉज द फर्स्ट डिश प्रिपेयर्ड एज पर हिज रिसर्च, जिसको कि सभी ने अडॉप्ट किया और सारे कल्चर्स में वेरी हुआ। तो इसके हिसाब से वेदों के हिसाब में सबसे ज़्यादा खाने के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता रहता है, हम लोग दादी नानी की कहानियों से भी, कि खाने में ऐसा हुआ, खाने में ऐसा हुआ, इस तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे टेक्स्ट में हम लोग ज़्यादा नहीं लिखते थे, लेकिन लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हर चीज को कैटलॉग किया है और उसको गजट नोटिफाई किया है। आई वॉज गोइंग थ्रू आर्काइव्स इन लखनऊ, तो वहाँ पे फूड आर्काइव्स में मुझे एक गजट नोटिफिकेशन मिला, जिसमें कि 50 तरह का पराठा बनाने का तरीका उन्होंने नोटिफाई किया था। हाउ टू मेक बर्फ, मतलब आइस क्यूब्स एट दैट पीरियड इन मुगल पीरियड, उसको नोटिफाई किया गया था। तो ऐसा नहीं कि आज जो हम यूज कर रहे हैं वो पहले नहीं, लेकिन हाँ, पहले बनाने के तरीके अलग थे, आज के डेट के तरीके अलग हैं, पर फूड वाज आल्सो दैट टाइम। तो उन स्टोरीज को जब हम पढ़ते हैं तब भी हम फूड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एंड थर्ड इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जिसको कि हम लाइक कि सेना के लिए हम क्या बना रहे हैं, अब आर्मी पे हैं, बॉर्डर पे हैं, तो क्या बन सकता है। इस तरह से बहुत ढेर सारे आज की डेट में इतने शेफ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। और आज के बच्चे नो फायर क्विजीन है, तो नो कैलोरी क्विजीन है, तो किलो कीटो डाइट है। सो मेनी थिंग्स आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड। दैट्स हाउ वी डेवलप फूड, बिकॉज फूड इज
integral part of our development. Without food, no culture is complete. Without food, no life is complete. So that is why we have different texts, different this. And आप ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक खाने को हमने 3 कैटेगरी में, हमने नहीं, आयुर्वेद ने डिवाइड किया हुआ है। और सात्विक फूड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आप उनको देख सकते हैं, और उसके ऊपर फिर हम फर्दर, क्योंकि सात्विक फूड जनरली उनके लिए होता था जो घर में काम करते थे, या तामसिक जो आर्मी के लोग होते थे, क्योंकि खाने के बाद जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो, और इसको हम दूसरे टर्म में मेटाफिजिकल कंटामिनेशन भी कहते हैं। तो मैं मेटाफिजिकल कंटामिनेशन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप अपने घर में अपनी वाइफ को या मम्मी को ये बोल के गए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं फ्रेंड्स के यहाँ जा रहा हूँ, किसी भी वजह से वहां गए और आप ने खाना नहीं खाया और लौट के घर आप लेट आते हैं, एंड दैट टाइम यू टेल योर वाइफ और मदर कि यार मैं कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ बना दो। शी विल फर्स्ट, अरे मैंने आपके लिए कुछ बनाया ही नहीं है, आपने क्या कहते हैं खा के आएंगे। एंड देन वो जो भी हो, इफ शी मेक्स स्मॉल रोटी एंड दाल, या केवल रोटी और अचार भी दे, तो खाने में जो तृप्ति होती है वो कहते हैं आपके जो शादी या जहां भी कहते हैं वहां आपके बुफे डिनर में भी या थाली डिनर में भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाले की मानसिकता होती है वो खाने के अंदर आती है, और वही उसकी प्रवृत्ति को सेट करती है। तो राजसी, सात्विक और तामसिक भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, तो उसको बनाने का जो तरीका है या बनाने के वाले की जो मानसिकता है वो भी उस भोजन में प्रकट करती है। और इसीलिए पुराने समय में हमारे यहाँ किचन में जाने के लिए बहुत से रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए थे कि आप जो खाना बनाने वाला है वो बिना नहाए नहीं जाएगा। तो इट वॉज द हाइजीन टू बी मेंटेन, एंड द mindset of the people who is cooking food, the person who is cooking food, that two aspects were very very important। और इसी वजह से तो तामसिक है, किसी भी हालत में बनाओ और कैसे भी खाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें खा के लड़ने के लिए जाना है या तुम्हें काम पे जाना है, सो तुम्हारी मानसिकता जो है तामसिक होनी चाहिए। राजसिक, जो हम एलोबरेट डिनर करते थे एक दूसरे को, डिनर डिप्लोमेसी की जो मैंने बात कही, तो दैट इज राजसिक। और सात्विक जो हमारा एवरीडे फूड हुआ करता था। ये एक जनरल टर्म है, बट बेसिकली ये जो जो आपका मेटाफिजिकल कंटामिनेशन है वो उसको जितना इन्फ्लुएंस करता है खाना बनाने वाले की, जो उस समय माइंडसेट है खाना बनाते वक्त, वो जो इन्फ्लुएंस करती है वो आपका इन फिलॉसफी को, इस गुण को वो आगे बढ़ाता है। और इसी को फर्दर मैंने एलोबरेट किया है सात्विक तामसिक, क्योंकि जो सात्विक फूड होता है वो बेसिकली मैनिफेस्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ, योगा, मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, हार्मनी इन योर बॉडी, हार्मनी इन योर माइंड एंड वर्क। सो दैट इज सात्विक। और इसीलिए जो आज की डेट में हम वेगन क्विजीन, वेजिटेरियन क्विजीन, जितना हम कहते हैं डेवलप हो रहे हैं, उतना ही हम मानसिक शक्ति, शांति के लिए अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और इसलिए उसका में खाने का सबसे बड़ा रोल है। और आप अगर देखें तो जिस तरीके से इस्कॉन बढ़ा है, जिस तरीके से श्री श्री का आश्रम बढ़ रहा है या सदगुरु का आश्रम बन रहा है, लोग उनके ऐसे जो खासकर यंग जनरेशन हैं वो दे आर बीइंग पार्ट ऑफ इट, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। क्योंकि हम जितने भी कॉमर्शलाइज होते जा रहे हैं उतना ही हमें मानसिक शांति की भी जरूरत है, और फूड उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज वाई सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये उनकी टेंडेंसी से ट्रेड्स यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि एम्बिशन, ट्रेड, पॉलिटिक्स, एक्टिविटी, फ्यूल, एम्पायर बिल्डिंग। तो अगर जो भी है, खाने का आपकी मानसिक प्रवृत्ति पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। और ये जो मैं कैलेंडरी मैप ऑफ मोज़ैक की बात कर रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आप में से एक सर का था कि मैं ट्राइबल फूड और खासकर आंध्रा नोमैटिक फूड की वो बात कर रहे थे, तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्शन है हमारे भारतीय खाने में, ये कैरेक्टराइजेशन का। क्योंकि जो हमारी नॉर्थ इंडिया की फूड है वहाँ पे मेरा हरा भरा हरियाणा, जहाँ पे दूध दही का खाना,
टाइप आपको मिलेगा। तो इसलिए बटर चिकन भी है तो बटर है, पनीर है। सो घी, बटर, पनीर, छाछ, मट्ठा, lassi is more there. Whereas when we come towards south, I said spicy and savory and fermented food. That is very, very much because in coastal area, because of the weather, everything ferments very fast. So how to utilize, though it is a very good medicinal, fermentation has very good medicinal values, but still the food of south is more focused on the, I'll not say कि South Indian food is pure vegetarian food. Non-vegetarian is also there. Chettinad है तो Malabar है, but maximum 80% food is vegetarian, and fermentation and spices are given importance in their food. If I talk about East India, तो again फिश बिकॉज द कोस्टल है, वैसे भी आइदर कोस्टल एरिया है आपके बंगाल की साइड का, या फिर हम बिहार झारखंड की साइड जाते हैं जो माइंस एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पे स्टेपल डाइट जैसे मैंने कहा मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इधर क्यों आते हैं। और वेस्टर्न इंडिया अगेन, बॉम्बे फूड को मैं अलग रखता हूँ, पर गुजरात और महाराष्ट्र एंड अदर छत्तीसगढ़ के फूड को मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, क्योंकि बॉम्बे फूड इज ओनली द वर्किंग क्लास फूड, कि आप सुबह सुबह निकले और आपने बड़ा पाव लिया, खाते हुए वर्क पे चले गए, खाते हुए आप लौट के आ गए, वो वर्क फूड है। लेकिन जो बेसिक महाराष्ट्रन फूड है, महाराष्ट्रन थाली है, वो एक अलग तरीके से सेट होती है। और इस अब जो अलग चीज है मैं उस पे आ रहा हूँ, खासकर टेम्पल फूड। और जो लोग भी साउथ से हैं उन्हें मालूम होगा कि टेम्पल फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत से मंदिर में आप देखें तो सुबह के समय प्रसाद में कर्ड राइस, सॉरी कर्ड राइस कह रहा हूँ, लेमन राइस और टेमरेंड राइस is served as prasad, and then everybody takes it and go take the prasad and go directly to the office too. सेम वे पूरी मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे खाना खाना ही है। जैन मंदिर में आपका जगह जगह लंगर भंडारा। सो टेम्पल फूड cuisine इज अ सेपरेट, कि उसमें बिना लहसुन प्याज का खाना होगा ये नहीं पड़ा, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी आस्पेक्ट एंड मतलब अ बिग आस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल फूड यूज। यहाँ पे मैंने टेम्पल फूड को सात्विक के साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि सात्विक फूड एक मानसिक अवस्था की ओर करते हैं, जबकि टेम्पल फूड जो है यहाँ पे लोग दान में खाना बनवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं या अपनी ओर से स्पॉन्सर करते हैं, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। इसी तरीके से फूड फेस्टिवल्स जो आप कम्युनिटी फूड करते हैं, जैसे कि दशहरा का मेला देखने गए तो कोई भी घर में खाना नहीं खा रहा, मेले में ही खा के आएंगे। या वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के समय कहीं पे लोग अपने 5 दिन पंचमी से लेके नवमी तक कोई भी घर में खाना ऑलमोस्ट नहीं बनाता है। दैट इज द कल्चर ऑफ द प्लेस। तो इसी तरीके से आप देखें डिफरेंट फूड फेस्टिवल्स होते हैं। और जो कहने का मतलब ये था कि फूड इज नॉट इंडिविजुअल चॉइस, इट ब्रिंग्स कम्युनिटी टुगेदर टू। और इसी को मैं एम्फेसाइज करने के लिए बात कर रहा हूँ टेम्पल क्विजीन की एंड वाइब्रेंट फूड फेस्टिवल्स की। और देन कहते हैं ये होता है कि भाई मैंगो फेस्टिवल, क्रॉप या केवल एप्पल फेस्टिवल, जो कि हम केवल एक प्रोडक्ट को हाईलाइट को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हाईलाइट और उसके लिए भी यूज करते हैं। सर, now again, I'll ask you to ask me some questions, something on this. अगर बोर लग रहा है तो भी बता दीजिए। हेलो। नो सर। सो Yes, तो sir. नहीं है। Sir, नो नो सर। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा लेक्चर चल रहा है सर। हैं? मेरी बात आपको सुला तो नहीं रही है ना, पहले ये बता दीजिए। अच्छे से समझ में आ रहा है सर। हाँ नहीं, वो लंच के बाद का सेशन होता है ना, तो उसमें ये चीज बहुत कॉमन होती है इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो भी फूड का एक एस्पेक्ट है कि लंच के बाद जो सेशन होता है जनरली लोगों की झपकियां लगी जाती हैं, सेमिनार में खासकर। हेलो।
नो सर। नमस्कार, कुछ पूछिए, सवाल पूछिए। सात्विक फूड, मानसिक फूड, तामसिक फूड, अगर कोई भी सवाल है तो जरूर आप पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि इससे छोटी छोटी कहानियां जो फूड के बारे में है, जब हम वो शेयर करते हैं तो फूड इंटरेस्टिंग बन जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नो क्वेश्चंस? या तो मैं बहुत सर अच्छा एक टीचर हूं, सब समझ में आ रहा है, या मैं एकदम बोल रहा हूँ कि कोई सुनना नहीं चाहता। हेलो? नो क्वेश्चंस, शैल आई गो अहेड? Yes, sir. Okay. यस सर, यस सर। ओके। सो इससे पहले भी मैंने जस्ट मेंशन किया था कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू वन ऑफ द मेन डिश। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईद की बात करते हैं तो बिरयानी ऑटोमेटिकली, होली की बात करते हैं तो गुजिया एंड ठंडाई, गणेश चौथ की बात हुई तो मोदक, ऑटोमेटिकली इट कम्स इन अवर माइंड। सो इनका रिलेशन क्या है? हम क्यों उस फेस्टिवल पे उसको इतना ज्यादा रिलेट करते हैं? और इसका पूरा, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर हम देखें तो हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी जो साइकिल है वो एग्रीकल्चर साइकिल के साथ मैच करती है। चाहे वो पंजाब का बैसाखी और लोहड़ी हो, चाहे आपका होली या दिवाली हो, उस समय किसान जो अपना प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाए होता है, और उन पैसों का ही करते हैं। तो इसीलिए जैसे लोहड़ी हो रही है तो जो फ्रेश क्रॉप आई हुई है, हम उसको भगवान को समर्पित करते हैं। तो पॉपकॉर्न डालते हैं, या और मक्का डालते हैं, उड़द की दाल डालते हैं, इस तरीके से। हर क्रॉप का एक समय है, और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए जो उन डिशेस को उस क्रॉप के साथ जोड़ के ही स्पेशल दिया जाता है। हाँ, जहाँ तक बिरयानी की बात है, मैं ईद की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो क्रॉप से नहीं जुड़ी है, मैं सारे दूसरे रिचुअल्स की बात कर रहा था। तो वहाँ पे चूंकि जनरली उस दिन बलि दिया जाता है, या आप उसको चाहते हैं, तो वहाँ पे जो भी मीट निकला उसको आप कम्युनिटी की तरह पकड़ के लोगों में बांटते हैं। उसमें भी है, जक़ात है तो मस्जिद में देना है, तो लोगों में बांटना है, कई उसके अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। तो जनरली वो चूंकि आप दूसरों को गिफ्ट में देते हैं, तो लोग उनका डिशेस बनाते हैं। इसलिए तो मेन चीज हमें यह ध्यान रखें कि हमारे फेस्टिवल के जितने भी फूड हैं, वो उस कस्टम से, उस समय के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेट होते हैं। तो इसलिए जब हम खाने की बात करते हैं और हमें वहाँ के कल्चर की बात करते हैं और वहाँ के एग्रीकल्चर का हमें अंदाजा नहीं है, तो हम कभी भी सही उसको नहीं समझ, सही तरीके से वहाँ के खाने को नहीं समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आज के डेट में जो है, दैट इज वेडिंग। और वेडिंग में आपने देखा होगा कि इन मॉडर्न डेज वेडिंग, जितने लोग हैं कि हमारा ये इंटरनेशनल काउंटर लगा हुआ है, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड का काउंटर है, या तो अगर आप हैं तो आधे से ज्यादा डिशेस तो आप सोच के जाते हैं ये तो होगी ही होगी, कि एक पनीर की डिश होगी तो एक दाल होगा, एक ये होगा। लेकिन कहते हैं वो बहुत ज्यादा ही, जहाँ पे एलोबरेट डिनर की बात होती है, आप 10-15 काउंटर्स 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 देखते हैं। तो वेडिंग हमारे यहाँ बेसिकली सिर्फ एक वेडिंग नहीं होता था। वेडिंग जो था वो हमेशा पूरे गांव की इकोनॉमी को चैलेंज करता था। इसीलिए आप देखें कि शादी का कोई भी रिचुअल होता था तो गांव का बर्तन खरीदना है, तो जो ठठेरा, जो बर्तन बनाने वाला है वो भी इन्वॉल्व है, जो कारपेंटर है कि बेड देना है, पलंग देना है, जो भी है। इसी तरह से कपड़ों के लिए तो जो भी बाजार वाले, बजाज या कपड़े वाले होते थे, जितने रिचुअल्स होते थे, तो उसमें पंडित, नाई, धोबिन, सभी की इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी। रीजन ये था कि जब भी गांव में कोई भी चीज हो तो सभी लोग साथ आए, और सभी उसके अंदर ट्रेडिंग करके उनके साल भर की जो इकोनॉमी है उस साइकिल को हम रिवाइव करते रहें। और इसीलिए वेडिंग के यहाँ लोग आज के डेट में कहते हैं इतना खाना बर्बाद हो रहा है, इतना ही। लेकिन अगर हम उस थॉट प्रोसेस को शुरू के समय से देखें, तो हमेशा यह था कि अगर किसी के घर में खुशी है तो पूरे गांव वाले, पूरी जो कम्युनिटी है वो मिलकर उसको सेलिब्रेट करे, और उस सेलिब्रेशन में
फूड इज ऑब्वियसली द वन पार्ट, लेकिन सभी के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग हो। और इसीलिए सोनार से लेके लोहार तक, कारपेंटर से लेके कहते हैं मैसन तक, सभी के लिए कोई ना कोई काम, शादी के समय पूरे घर का रंगाई पुताई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सभी के लिए काम निकाला जाता था। और ये इकोनॉमी का एक रिसोर्स हुआ करता था, जो कि आज की डेट में हम अपनी सोच को उस हिसाब से नहीं देखते हैं। हालांकि हम उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन कभी भी हम कम्युनिटी ट्रेडिंग और कम्युनिटी इन्हेंसमेंट की तरह से अपने वेडिंग फंक्शंस को नहीं देखते थे। और इसी वजह से लेविश स्प्रेड होता था, सिंबलिज्म ऑफ रिचुअल्स होते थे, बहुत से रिचुअल्स सिर्फ लोगों को कि भाई धोबिन जो है वो सिंदूर दान करेगी, तो नाई जो है वो दूल्हे के साथ जाएगा, शहवाला ऐसा बैठेगा, एक घोड़े वाला ऐसा होगा, तो सभी के लिए काम निकालने के लिए उस कम्युनिटी के पार्ट बनाए जाते थे। और वेडिंग एक बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी का रिसोर्स हुआ करता था इनिशियली। अब हम आते हैं अगेन रीजनल वेडिंग फीस्ट पे। तो आप देख लें सेंट्रल एशिया, साउथ इंडिया, और मैंने उसको थोड़ा सा किया क्योंकि साउथ में फूड के ऊपर इतना ज़्यादा एलोबरेशंस नहीं होता है जितना नॉर्थ में होता है, जितना राजस्थान में होता है। लेकिन अगेन मैंने बोला कि पूरी कम्युनिटी के लिए होता था, तो अगर फूड पे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपके कपड़े और ज्वेलरी पे, जैसे कि वीवर्स को, गोल्ड स्मिथ को, एंड कहते हैं जितने भी बर्तन बनाने वाले कारपेंटर, सभी का कुछ ना कुछ चलता रहे, ट्रेड चलता रहे। तो फूड इज अ बिजनेस टू। तो अब मैं उसको कम करता हूँ, एम्बरेसिंग इंडियन टाइमलेस नॉलेज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। मैंने जितना बोला है अगर आप उसको जोड़ें तो हम हमारे सारे फूड और कल्चर को इन्वेडर्स की वजह से डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस आए हमारे, जो कि हमारी हिस्ट्री में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा फूड हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जैसे कि इतने इन्वेडर्स के बाद भी हम स्ट्रांग खड़े हैं, उसी तरह बिकॉज ऑफ आवर स्पाइसेस एंड आवर कल्चर ऑफ कुकिंग, जो हमने वैल्यूज सेट किए, हाइजीन वैल्यू फॉर द किचन और सर्विंग के स्टैंडर्ड सेट किए, आज भी हमारा फूड उतना ही प्रोमिनेंटली लोगों के लिए सामने आता है। और जब भी हम किसी भी अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा हम उसको अपने फूड के साथ जोड़ के चलते हैं। इतना ही कहूँगा बस मैं। ये जो कुछ लोगों के रेफरेंसेस हैं जो मैंने लिए हैं बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि उनको भी वो क्रेडिट मिले, तो आप लोगों के सामने वो प्रेजेंट करता हूँ। और अब मैं सोचता हूँ कि अब आप क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस आप पूछेंगे नहीं, मुझे लगेगा कि मैंने जो भी कहा है उसमें कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, या बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। प्लीज। Sir, I want to ask one question. श्योर मैम। मैं खुद किचन में जब बनाती हूँ कुछ खाना, तो मैं ज्यादातर लहसुन प्याज का यूज करती हूँ। हमारी फैमिली तो पूरी वेजिटेरियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लहसुन प्याज से टेस्ट आता है, लेकिन सब कहते हैं कि उससे तामसिक नेचर ज्यादा होता है, इसलिए वो लहसुन प्याज का यूज नहीं करना चाहिए। तो कित पर ये जो है ये सच है? देखिए ऐसा है कि लहसुन प्याज, मैं भी जब वॉइस इज नॉट कमिंग सर। कश्मीरी मुस्लिम वाजवान है, उसमें वो कश्मीरी प्याज जो शैलेट कहलाता है, सफेद रंग का लंबा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली लहसुन और प्याज जो है वो तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है आयुर्वेद में। इस वजह से जो हम अपने घर का जो खाना बनता है, हमने उसको सात्विक, बेसिकली वो मानसिकता से जुड़ा है, उसको लहसुन प्याज से तो ज्यादा। लेकिन लहसुन और प्याज जो है बदन में गर्मी देता है, और जब गर्मी देता है तो हमारे अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको वो आगे बढ़ाता है। इसलिए जो बहुत से वेजिटेरियन घर हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं हम लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन अगर आपके घर में स्वाद के हिसाब से उन्हें नहीं पसंद है तो ये अलग बात है। पर बहुत सी डिशेस हैं जो कि आपको अगर मसाला प्याज का बहुत अच्छा भुना है तभी स्वाद आएगा। फॉर एग्जांपल सोयाबीन चंक है, या क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस सोयाबीन होता है, या इस तरह की और भी चीज़ें हैं। और
बहुत सी चीजें हैं जहाँ बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी ड्राई वेजिटेबल बना रही हैं तो वहाँ पे प्याज और लहसुन ऑप्शनल, अगर ना भी डालें तो चलेगा। दैट इज व्हाट आई फील। तो मतलब प्याज लहसुन बुरा नहीं है, मैं ये कहूँगा, लेकिन खाने के अंदर वो बदन में गर्मी लाता है, इसलिए वो बहुत से लोगों को सूट नहीं करता और इसलिए लोग मना करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर और भी सवाल पूछे। मैडम का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि खासकर सात्विक और तामसिक भोजन को लेके ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसा खाना वैसी हमारी मानसिकता। जी माधुरी मैम, आई थिंक देर आर नो क्वेश्चंस। हेलो, प्रेजेंटेशन शेयरिंग बंद कर दो। कहाँ से है? हेलो। Sir, no question, sir. नो क्वेश्चंस। Yes. तो देन अगर कोई भी क्वेश्चन किसी के पास से नहीं आ रहा है तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बातें चीज़ें सुनी। और अगर और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, sir. Thank you, sir. Room 24. Yes, sir. Yes. हाँ। Shall I receive the word of thanks? यस। Yes, 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 sir. Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, respected organizers and participants, as we come to the conclusion of today's day 5 third session on a refresher course on Indian Knowledge System, skill-based in curriculum development program, I feel privileged to stand before you to deliver the vote of thanks. First and foremost, on behalf of the Dr. Baba Sahib Ambedkar Marthwada University, Chhatrapati, and Malaviya Missions for Teacher Training Centers, I would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest and resource person of the day 5 third session, Dr. Srivastava, Principal IHM Mumbai, for taking the time to grace us with his presence today. We are truly honored by your words of wisdoms, and your insights will surely leave a lasting impact on all of us. Thank you for being with us today. I would also like to extend my sincere thanks to Director UGC Malaviya Mission Teacher Training Center, Dr. Baha Sabik Ambedkar Mathwara University, Chhatrapati, for their valuable contributions. Your support have made the event a great success, and we are deeply grateful for your time and efforts. To the organizing team, thank you for your hard work, dedication, and seamless coordinations. Your efforts behind the scenes have truly made this event a success. Last but not the least, I would like to thank our wonderful participants for their valuable participation and attentions. Your presence and enthusiasms have made this event even more special. As we close today's day 5 third session event, let us carry forward the knowledge, inspirations, and the connections we have gained. Thank you. Have a great day. Thank you all the participants. Thank you. Thank you, sir. Yes, thank you.
People are ready. Yes. Yes, roll number 25. Yes, roll 25. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो सर ऑडिबल सर. ऑडियो सर आवाज आ रहा है सर? ऑडिबल सर आ आपका रहा. आवाज नहीं आ रहा. 25 आपका साउंड नहीं आ रहा सर बराबर से. हाँ आपका वीडियो बंद कीजिए सर. ओनली आपका ऑडियो ऑन रखिए. ओके सर ओके. आवाज आ रहा है? ये सब आवाज आ रहा है सर. आपका रेडी कीजिए बायोडाटा. ऑलरेडी सर ज्वाइन हो ठीक चुके हैं. ओके थैंक यू. नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. Myself, Dr. Kaushlesh Pathak, roll number 25. I am working as assistant professor in botany in Prime Minister of Excellence College, PG College, Government, Tikamgarh, Madhya Pradesh. I am also thankful to Director UGC, MMTTC, Baba Saheb Ambedkar, Marathwada, Sambhaji Nagar for give me this opportunity. So I heartily welcome respected Professor Manager Raj Dev Singh sir, who has invited to the second session for delivered a lecture to online refresher course in IKS skill based in curriculum development organized by Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, UGC Malvi Mission Teaching Center. Now I start reading to achievement for Professor Rajdev sir, long time. Professor Rajdev Singh sir, presently working as research associate in the Department of Tourism Administration, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, since last 2 years. Heretofore to this, he has worked as DG in National Research Laboratory for Conservation, Lucknow, UP, and sir worked on Indian Institute of Heritage, New Delhi, for about 6 years. Retired as Superintendent, Archaeological Chemist, Archaeological Survey of India, Aurangabad in December 2015. Professor Rajdev sir also worked in other central government organizations like Naval Science and Technological Laboratory, Visakhapatnam. Sir Rajdev sir, Geological Survey of India, Bangalore, prior to his service in ASI, associate with the conservation of Allura Goa Church murals for around 16 years and visited numbers of countries. Sir has to his credit 143 published research paper, mostly in foreign journal, and 4 books published by international and national publishers are also to his credit. He is widely covered in electronic media likely Discovery Channel, German and Japanese TV for his conservation work
of Ajanta murals. Therefore, I am very happy that respected sir will introduce us the work he has done over the years of the intellectual level. Sir, I am request to start your lecture. Thank you. Okay. I can start. Thank you so much, Dr. Pathak. And I have two lectures, one on organic additives and another is on the conservation of Ajanta murals. So actually my lecture was on Monday afternoon, but for some reason or some lecturer is not coming in time, that I have to come in place of that lecturer. So today I have the lecture. My first lecture was on organic additives used in ancient earthen plasters. And the second lecture was, since I have worked for a very long time in for the conservation of Ajanta caves, almost 16 years I worked for the conservation of Ajanta caves when I was in service in Archaeological Survey of India. So I will go for the Ajanta cave first, and this will give an indication about the role of organic additives in the earthen plaster, why they have used so much of organic additives, and what are the organic additives and what purpose, for what purpose they have used in the Buddhist caves of nearby Aurangabad, Sambhajinagar. Like Aurangabad caves, Ellora caves, Karla, Bhaja, Pithalkhora. In all these caves, earthen plasters, I have analyzed for their composition as well as for their organic additives. So that will take up it on tomorrow. So today we'll just go for the conservation work which we have done at Ajanta caves during my long posting at Ajanta caves. Before that, I want to show a 10 minutes clip which is covered because of that work, because it is covered on the Discovery Channel. I think it will be interesting and give a rough idea about what Ajanta problems, conservation issues for the Ajanta cave. So we will go for, first of all, the 10 minutes discovery clip, and then we'll again start for the lecture. डेली प्लैनेट गोज टू इंडिया में आपका फिर स्वागत है। मैं हूँ किम चक्रियानी। हमारे पीछे मुंबई है, देश का सबसे बड़ा शहर। और मैं हूँ जे इंग्रम। इस देश में 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी और मेरी मनपसंद वर्षा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विषमताओं की धरती है? देश के एक हिस्से में कहीं भयंकर सूखा पड़ा होगा तो दूसरा हिस्सा बाढ़ में डूबा होगा। और इसीलिए यहाँ की नम जलवायु अजंता गुफाओं के लिए खतरा बन गई थी। ये गुफाएं इस देश को विरासत में मिली सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सुंदर गुफाओं में से एक हैं। गुफा की प्राचीन कला को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोग प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं। काले बेलासार में वो जो छोटे छोटे द्वार हैं, उन्हें 2200 साल पहले अनजाने कलाकारों ने बनाया था। वो तराशते तराशते अंदर तक पहुंच गए और बन गई ये वैभवपूर्ण रचना। ये गुफाएं बुद्ध के देवालय हैं। ये मूर्तियां उनके जीवन और मृत्यु की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन ये साथ ही माहिर राजगीरों के बारे में भी बताती हैं। इस खिड़की को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण भगवान बुद्ध पर ही पड़े। कुछ गुफाओं में ज्यादातर पत्थर ही बचे हैं, लेकिन कुछ में मूल चित्रकारी अभी भी है। ये परिष्कृत भित्ति चित्र ऊबड़ खाबड़ सतह पर है। चट्टान, मिट्टी, गोबर, सूखे पत्तों और चूने के मिश्रण से ढकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर माहिर राजगीर जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं।
उनके चित्र सही सलामत हैं और उनकी 29 गुफाएं अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत हैं। ये दुनिया की नायाब जगह है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। ये वाकई देखने लायक जगह है। पूरे भारतवर्ष में इतनी खूबसूरत जगह शायद और कोई नहीं है। मिस्टर सिंह का मतलब है इसे ऐसे ही रखा जाए। आज वो फिल्टर पेपर में हल्का रासायनिक पाउडर और तरल पदार्थ मिला रहे हैं। इससे वो सदियों से गंदे हो रहे पत्थरों को साफ करते हैं। इस चिपचिपे पदार्थ को वो फैला देते हैं और 15 दिनों तक गीला रखते हैं। परासरण की इस पूरी प्रक्रिया द्वारा पत्थर की सतह पर कई सालों से जमी हुई सारी धूल लुगदी में आ जाती है और फिर इस गंदी परत को खुरच देते हैं। इसके बाद हल्का साबुन और अमोनिया मिलाया जाता है। पत्थर पर झाग को खूब अच्छी तरह से लगाते हैं और ब्रश से साफ करते हैं। थोड़े से दबाव और आश्रित जल की जोरदार धुलाई से सर्पों के राजा नागराज का चेहरा उजागर हो गया है। अगर मिस्टर सिंह की समस्याएं इतनी ही साधारण होती तो पानी उनका हल हमेशा ही होता, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ हर साल बहुत बारिश होती है। सिर्फ एक महीने में यहाँ 700 मिलीलीटर वर्षा हो सकती है। यहाँ ये पानी समस्या क्यों है? दरअसल ये ज्वालामुखीय कगार परतों में बना हुआ था। पानी परतों के बीच की जगह घुस जाता है और गुफाओं में पहुंचता है। हाल ही में रिसे पानी के सफेद दाग मौजूद हैं, लेकिन ये अनचाही जगहों पर भी चू सकता है। प्लास्टर गिर जाता है और पेंट खराब होता है। छत को नमी से बचाने के लिए मिस्टर सिंह एक परत चढ़ाते हैं। वो रबड़ जैसे प्लास्टिक पॉलीविनाइल एसीटेट के बहुत ही पतले घोल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ स्टोन प्लास्टर से खराब होती दीवार को बचाया जा रहा है। दरारों में जल निरसन एथिल सिलिकेट डाला जा रहा है। पहले वो कंक्रीट इस्तेमाल करते थे, लेकिन उससे पानी अंदर जाता था, इसलिए अब वो स्टोन प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसाल्ट जैसा है। पानी इकट्ठा करने और उसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने गुफाओं के ऊपर नालियां बनाई थीं, लेकिन अब वो पानी को दूर नहीं रख पाती। कहा जा रहा है कि अब वो ऊपर से मिट्टी हटा रहे हैं और सभी चट्टानों को बंद कर रहे हैं। अब तो पर्यटकों के आगमन पर भी नियंत्रण हो रहा है। वजह है कि सांस लेने की प्रक्रिया से नमी बढ़ती है। नमी के ज्यादा होने पर गुफा में सिर्फ 40 आदमी जा सकते हैं और परीक्षण के मुताबिक ये बात सही है। ये शुष्क मौसम में 30% होती है, जबकि वर्षा ऋतु में 80% तक बढ़ जाती है। लेकिन इन गुफाओं में जलवायु नियंत्रण क्यों नहीं है? ये प्राकृतिक परिवेश में सही सलामत रही हैं। अगर आप जलवायु संबंधी परिस्थितियां बदल देते हैं तो हो सकता है चित्रकारी को कुछ नुकसान हो जाए और जिसका पता हमें न चले। इस गुफा को खराब करने वाले का इरादा अच्छा ही होगा। अब मिस्टर सिंह को वार्निश हटानी पड़ेगी क्योंकि वो इतनी काली हो गई है कि उसने चित्रकारी को ही छुपा दिया है। सिर्फ 3 वर्ग मीटर साफ करने के लिए 6 लोगों को एक पूरा साल लगेगा और ये काफी खतरनाक काम है क्योंकि पेंट घुलनशील है और उन्हें तेज कार्सिनोजेनिक रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप विलायक में थोड़ा सा भी पानी मिलाते हैं तो वर्णक धुल जाएंगे। इसलिए चित्रकारी को साफ करने के लिए हमें ऑर्गेनिक विलायकों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये चट्टान इस तरह की दिखाई देती थी और अब ऐसी है। साफ दिखाई दे रहा है कि राजा गया तो था हिरण का शिकार करने, लेकिन भूल से तीर सामा नाम के आदमी को लग जाता है। 15% वार्निश को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। सिंह बेहतर टेक्नोलॉजी के इंतजार में इसे छोड़कर खुश हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे सहकर्मी बहुत संतुष्ट हैं। अपनी विरासत को बचाने के लिए हम जितना कुछ भी कर पाए उससे हम खुश हैं। हमारी ये विरासत पूरे ब्रह्मांड में बेमिसाल है। मुझे नहीं लगता कि ये अपने किए गए कामों से कभी संतुष्ट हो पाएंगे। धातु के तारों का सहारा देने की हमेशा जरूरत रहेगी। वक्त के साथ भुरभुरी होती मूर्तिकाओं पर प्लास्टर लगाना होगा। उस उबड़ खाबड़ प्लास्टर पर कीट छेद बना देंगे, इसलिए दवा का छिड़काव करना हमेशा जरूरी काम होगा। और 20 शताब्दी पहले जलाई गई धूनी की कालिख को भी साफ करते रहना होगा और इन भित्ति चित्रणों से भी निपटना होगा। हर मकान मालिक जानता है कि कुछ न कुछ मरम्मत की तो हमेशा जरूरत रहती ही है, फिर चाहे वो ईश्वर के लिए बनाया गया खास घर ही क्यों ना हो।
डेली प्लैनेट गोज टू इंडिया में आगे देखिए कि भारत की एक बहुत ही रहस्यमयी परंपरा में कैसा नाटकीय बदलाव आया है। साफ पानी लाने की कोशिश में और लेक्चर आपको नेक्स्ट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से दिस वन लिखिए सर। यस शुरू करें। माइक साहब जा रहा है ना सब। So are you able to listen to me now? Hello. Yes, sir. आपकी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है सर। आपने देख लिया क्लिप डिस्कवरी का? हाँ, देख लिया हाँ? सर। देख लिया। देख तो लिया। फिर आगे चलते हैं। हाँ, फिर आगे चलते हैं। विल गो फॉर मूव फॉरवर्ड। सो आपने तो बहुत सारे लोग जो है, आई थिंक दैट आई जस्ट सा दैट मेनी लोकल पीपल आर देयर। सो आपने इसको देखा ही है। अजंता केव्स को इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। This is the scene of the Ajanta caves in the rainy season, where now this is the time to see the Ajanta caves when the whole of the caves is lush green. So much of greenery is there, and that waterfalls and all those things that looks very beautiful in the monsoon. Yeah, cave number 26. You see that how beautiful it looks. So such lot of care and has been taken in the making the caves. Cave number 2, see how beautiful it looks, the paintings with the caves on the ceilings, on the walls, on the pillars. So this is the front view of cave number 2 with beautiful paintings. This is where the caves are located. From the viewpoint, you can see that what are connecting or something. So right. Okay, and you can see here the beautiful murals. Such a intricate murals have been prepared. Such a beautiful paintings. You can see the man is going with the gift 1,500 years back in his hand, and how difficult it was there to make this painting in the dark of Ajanta caves. Not much natural light. How this painting were made, because these paintings cannot be made in artificial light. It is told that caves के सामने उन्होंने पांडिंग किया था, पानी भरा था, उससे रिफ्लेक्शन जो होते था उससे लाइट से उससे जो है वो उसके लाइट से जो है नेचुरल लाइट से दे यूज टू मेक दिस पेंटिंग्स. So and Ajanta is a place where there is a daylight, sunlight from morning to evening. They have chosen because out of there are many rocks, many hillock nearby Ajanta. But why they have chosen this particular hillock, not the other hillocks? Because this hillock has the one plus point. It is just near the waterfall point. So for your needs, you need the water for your daily routine. So and all the Buddhist caves in Marathwada in this part are in the Maharashtra.
they have been excavated near the near a point where the water is insufficient, waterfall point, where the water source is there. All the caves have been excavated near a water source point, so that water was there. And number two, the sunlight was very important, because without sunlight these paintings cannot be made. So Ajanta is a place where from the sunrise to sunset you will get the light. So that light was reflected into the caves through mirror or through water. I don't know that which one, no indication, nothing we could get it that how they reflected, because these paintings cannot be made in artificial light. They have to be made in the natural light, sunlight. So somehow the sunlight was reflected inside the caves and the paintings were made. You can see that this on my left side, this beautiful painting with the curly hairs, and that I got it from cave 1. Nobody was knowing about this painting prior to me. You can see how that masala she is grinding, and that her eyes are focused only on masala, or a dancing girl. Dancing girl, you can see cut in her clothes. So that fashion was not, it was there 1,500 years back also. It was the elephant was a logo for India tourism for many years. Now they have replaced it. So it was taken from the Ajanta caves. This is on the ceiling. These paintings are on the ceiling. And this is a beautiful medallions. You will see the cave number 2. It has got beautiful medallions with so intricate painting, intricate murals art is there. That's why Ajanta is Ajanta. Then you can see here that that arcs, what you see, if you look to any side, it will look towards you. If you go to your left and see the arcs, it will look towards you. If you go to your right, it will look towards you. It will see the front, it will look towards you. And that is what is called giving three-dimensional impact to the paintings. And when this three-dimensional impact to the painting was given by our artist, it was in 4th, 5th century AD. This giving three-dimensional impact to the paintings was later on researched by the Michelangelo in 13th, 14th century. So can you imagine how much advanced was India in the mural art? We were 1,000 years more advanced to any European. Because what they created in 13th, 14th century, we could create in 4th and 5th century. And this is the fine example. If you go to cave 26 and see many figures, they all have three-dimensional impact. So that art, our people, because what is called the master artists were working at Ajanta. And that is why they created such a beautiful murals. Now you see that this is a Buddha image from cave number 1. This is only one image, because and this is sponsored by the king himself, the king who made that made the Ajanta, who he is responsible for making this cave number 1, and this is the single Buddha image in the Garbhagriha inside the caves. Now what I have done it, I have thrown light from 3 different angles to this Buddha. I have thrown light from the right, I have thrown light from the left, and I have thrown light from the center. The single image you see our artist, how beautiful the artists were there. The single image, one Buddha is, the first one is laughing. You can see here, the face you can see that's a laughing Buddha. Second Buddha is this side, number 2, this is a meditating. It is very meditating, and the third Buddha is very sad. Single image, if you throw light from 3 different directions, the 3 different feel of the Buddha you are seeing. One is laughing, one is meditating, and one is very sad. So that is what how our artists were there, not only in the mural art, but even in making and this is the basalt. This has been, Ajanta has been carved from the basalt rock, and it is as hard as a granite.
it is very difficult to carve a basalt. It is too difficult to carve a basalt. So you can see here that how beautifully they have carved from the basalt, and the single image focusing light from three directions. You feel the three different feelings. The Buddha, only single image is laughing, meditating, and in very sad. This is cave number one Buddha. And then basalt carving all those figures. It is very difficult. You see that cave number 26, that Buddha, that enlightenment, when all the demons, they want to disturb his meditations, then he touched the feet. So what we call the Bhumi Asparsa Mudra or Nagaraja, you can see that how beautifully it has been carved. Then how the carving was done. This is the indication how the carving at Ajanta took place. They have that some of the caves have a height of around 80 feet. But you will not see if you make your house. We make our house. We go for so many scaffolding to put and then to work on that. But at Ajanta caves, being up to a height of 80 feet, you will not get a single indication of putting any scaffold inside the caves. So how this 80-feet ceiling has been carved without using a single scaffold? The reason here lies in the unfinished caves. This is, I think, cave number 22 at Ajanta. You can see here that they have carved, that they have cut out the rocks. How they cutting off rocks? To hammer and chisel. Two people was holding that chisel, and two persons, they were hammering the chisel, and a big chunk of rock it used to come, and they used to throw in the Waghura River in front of the Ajanta caves. So that's why that whole of the caves were made. All the caves were made only by the and when we did the excavation other side of the Waghura River, other side of the Ajanta caves, we found that houses of the workers, where these workers, they used to stay there on the other side of the river. They used to stay cooking there. We got a small Mahishasur Mardani image also, some gold coins also we got. So that how it shows that how people were staying over there and coming for the excavation at Ajanta caves. And you see, without scaffolding, you see that all the rocks have been cut, because in between you see that the big chunk of rock which is straight. They will not cut it unless until they finish everything on the ceiling. So once the rocks, whatever they have left in between, that they have not cut it, they have not planed the floor, but left it the rock in between. They used to climb on that, finish the ceiling, all the work, and then used to cut it again, that the floor. So that's why they could carve this, make these big caves only by leaving the rock some portions and standing over there and finishing the work on the ceiling, and then as soon as the work is finished, that you to cut the rock. This way, that whole of the Ajanta caves were made. So it was a very hard rock, a very difficult to cut, and then to work without scaffolding, climbing on these leftover rocks. You can just imagine that how many windows they have made, how many doors they have made, how the plaster was applied, why the painting was done without any scaffold, by whatever leftover rock is that is standing over there. So how the artists were there, how skilled artists were there 1,500 years back. And how many people were working? You see, this is an image from cave number 6. You see somebody on the down at the floor. You see somebody is cutting the rock. So the man who is cutting the rock, the persons who are responsible for cutting the rock, they have expertise in cutting itself. Then somebody is making the pillar. They see very rough. Some is making it smooth. Someone is making the sculptures on the top. And someone may be applying the mud plaster or lime plaster. Some may be drawing the figures, and some may be putting the painting. Someone may be painting at Ajanta caves. So what happened for making a single caves?
group of persons, not one or two persons, group of persons of different caliber. कोई राख में कटिंग में एक्सपर्ट, somebody is finishing में expert, somebody making the sculpture expert, some applying in the plaster, some applying, some making painting. Every people with a different expertise, they used to work together. And a rough estimate says that around 1,000 persons were working in each cave. 1,000 persons were working in each cave, and all these caves were made on the basis of donations. There we have around 124 inscriptions as Ajanta caves. Nobody, today somebody makes give 5,000 rupees to a temple. He says that हमारा नाम ऊपर लिखो कि 5,000 दिया. But here people have sponsored the thing, such a big thing, but you will not find a single person's name in the Ajanta caves. They say, as long as the sun and moon is there, this will survive. I am doing for the welfare of my parents. They are those words are there, but no, not a single name till that has been searched out. We have not found a single name that so and so has sponsored this thing, or so and so has nothing, no name at all. Everybody is talking about the God and their parents and all those things. So 1,000 persons. So there are 30 caves at Ajanta. If I regard that not take the 30 caves, I regard that 25 caves are a big caves. So 25,000 persons were working at Ajanta. And if you see that that Ajanta was at that time a jungle, forest area. Lot of that Waghura river is called because of the Bagh, lion. So it was a den of lion, and in that that thing, monks were staying and people were working, that technicians were working. So that was a difficult situation, how the Ajanta cave was carved in those situations. Just imagine, and thousands of persons were working, and everybody was staying other than the other side of bank of the river, and they were working, coming to the caves to work. So this is the history of how the Ajanta was made. You will see that very closely that basalt stone, you will see some part of the stone is very smooth, some is very rough. So why they have someone they have a smooth and some is very smooth and someone left very rough. The reason being that because they have used either lime plaster or earthen plaster, mud plaster, as a basic layer, as a main layer, on top of which the painting work was executed. So smooth surface cannot hold the earthen plaster. Mud plaster cannot stick to the smooth surface. To the smooth surface, only lime plaster can stick. So wherever they have applied the earthen plaster or mud plaster, they have always made the surface very rough. So this rough surface on top is for applying mud plaster, and the down portion in the very smooth is for the applying lime plasters. So they were knowing where they, because everything was coming that where you have to use lime plaster, where you to the mud plasters, and they were making the rock like that rough or smooth, depending on what they are going to apply. That was prefixed. The whole design was coming to them, that what has to be done on this portion, everything design, about the paintings and everything design used to come. So accordingly, the technician used to work. So this is the one way how the technician used to work. And then how the painting was done. Such a beautiful, I told you that master artist only working at Ajanta. So they are such a beautiful hand that all the drawings, this is from cave number 26, and this is Asmakas, who thought that they are going to rule that Ajanta for a very long time, but unfortunately they have to go. So they have made, this is the lime plaster. You can see the very smooth wall. The smooth wall on top of the smooth, a lime plaster has been done. And on the lime plaster, the red ochre they took, and the red ochre they made the figures.
And you can just look to the figures with the red ochre only, how beautiful eyes they are making, how beautiful everything is such a crystal clear, even in the diagram itself, figure itself, without putting the colors, even the figures itself. So this gives indication that how Ajanta painting work was executed. You see that that stone surface, either rough or smooth, they have applied lime plaster or earthen plaster. Then on top of that, lime wash was used. Lime wash was there to use, and then they with the drawing with the red ochre, they have drawn the figures. And now the nobody could, because they have Asmakas has to go. Nobody could fill it, this thing with the color. So it was left like that. No color was fixed into it. So this gives an indication how the painting work was executed at Ajanta. And then you can see the different layer. You can very well see that two earthen plaster layer. One is black, one is grayish. Two earthen plaster. You can see here that very clearly it is in the two earthen plaster layer. One layer, the inside layer, they have made it that to make the surface, because when they're cutting the rock, there was every chance that somewhere they go deep, somewhere go shallow. It is not so. This earthen plaster first layer was used to make the surface smooth, because undulation surface, on any undulation is there, if the surface is undulation, because the inner mud plaster was only to make the surface equal, no top and bottom is there, equal. So that was to make the surface inside the black layer mud plaster, to make the surface equal. Then second mud plaster, the gray color, you can see that it was applied on top of the first layer of mud plaster. This was to receive the colors. And then you can see that the top layer is color, in between you can see white. That was the lime wash. They used to apply the lime wash, because on top of the mud plaster they use a lime wash layer, and lime wash layers again the drying, you will see that used to dry and then fill with the paint, fill with the color. And all colors were earth colors. There is no artificial color, no organic colors, no modern colors. All colors were drawn from the earth. You see that if you go in the nearby your houses, you will see that red soil. From red soil, red was taken. If you go to somewhere in some places near the ponds, and you will see the yellow soil. Yellow soil, say yellow was taken. Near Ajanta, you will see a lot of green soil, because basalt has greenish things. All the green color, natural green was taken from the basalt. So you can get the red, yellow, green. Then black is always light black. Kajal jo hota है वो black and lime, and white was always lime or kaolinite. Kaolin white भी आता है, और shell lime भी आता है. सी सेल्स को क्रश करके उससे भी लाइन बनाते थे. तो 3 type of white has been used. That simple lime, kaolin white, and shell lime. So that is why, since this is the earth color, earth अगर rust जो है rust होता है, तो rust again cannot rust. So simply that earth has spark because of the disintegration of the surrounding rock. And earth में whatever the soil is there, it cannot further disintegrate. So that is why Ajanta painting cannot disintegrate further, and that is why all the color are safe. All color are safe. If the no water seepage or temperature, humidity, and all the problem is not there, so nothing will happen to the Ajanta painting, because the color is all natural color, earth colors. Nothing is artificial over here. No plant color. All are the colors derived from the natural earth. Okay. Then when we took over Ajanta to work for the conservation, you see that this Ajanta cave was for a very long time under the Nizam of Hyderabad. And the Nizam of Hyderabad, he invited I think in the 1920, some Italian conservator to conserve the Ajanta paintings.
So what the Italian conservator did, that wherever the painting was hanging from the gap has formed between the wall and the paint layer. So wherever they saw that the gap has formed between the wall and paint layer, they inserted some copper nail. So you see here that around the copper nail they have inserted. Jaga jaga pa painting में copper nail था, that we have removed now and inserted some chemical and fixed it. So this was the copper nail is from the 1920, that Italian conservator who were called by the Nizam of Hyderabad. Now what happened? See that when the Nizam called the people from Italy to conserve the Ajanta paintings, what they did to further conservation, they all these gaps you are seeing that in the paintings. These gaps, the gray color gaps you are seeing that Italians, they use Portland lime, means they mix cement and lime and fill all those portions. If they would have not filled, much of Ajanta painting would have lost. So Italians did a very good work of filling all those gaps. And once they filled all those gaps with the Portland lime, where that lime mixed with some cement or something like that was filled with that, and it has consolidated the painting. The further loss of the painting could be stopped. So then the further loss was not there, and they did a very good work of filling all those gaps which was created, because for thousands of years Ajanta nobody was knowing, because the Ajanta was made on the basis of donations. So 5th and 6th century, after when the Buddhism was declining and Hinduism was coming, there was no one to give the donation to the Buddhist art. And all the monks, they left Ajanta or these places, and they moved to the other countries, other 60 countries. There are 60 countries who follow the Buddhism religion, and they migrated to Himalayas. So you will see that in the Himalayan, you see a lot of Buddhist painting. They all are from the around 3 onwards. When the Ajanta and all these caves, which were 3rd and 4th century, from 1st century, 2nd century BC to 5th, 6th century AD, that very 7th, 8th century, very active this part. And by 7th, 8th century, the Hinduism was coming, and that nobody was giving donation to the Buddhist religion. All the monks, they left to Sri Lanka and other countries and moved to the Himalayas. So there they started making the Buddhist arts in the Himalayas. So, and the cave was abandoned. So for 1,000 years almost, the Ajanta cave was abandoned. Only lions and tigers, they were knowing that there are caves. That creepers, they grow. You can just imagine that 1,000 years, the unknown place, nobody was knowing. And creepers, they grow from top to from bottom to top and top to bottom. Everything was creepers were just holding like this. There was only that wild animals were able to enter inside the caves. It was such a thick, and all the caves, that lot of rain was there in front of many caves. Lot of rainwater and the soil and hillock, it has fallen. Because 1,000 years nobody was knowing this is Ajanta. So when the British soldiers discovered Ajanta in somewhere in 1819 or something, it took 100 years for this to clear all those jungles and all those things to Ajanta, and in the Nizam period. And then Italian were called to conserve this painting, and they did a very good work of consolidating these paintings by fixing all those gaps. But they did a very bad thing also. You can see here that on my left side, that the painting is giving some orange, yellowish orange look, because the Italians, what they did to preserve the paintings and a barrier to create a barrier between the environment and the pigment, they applied shellac. Shellac is a animal origin varnish. Shellac is available in Ajanta caves and nearby. Shellac, the shellac, they mix it in alcohol and they applied on the top of the paintings. So
and actually they should have discolored the shellac. They have not removed the color of the shellac before applying to Ajanta painting. They should have discolored it and then applied, but they didn't do it. The discoloring they didn't do, and as a raw shellac mixed in alcohol they applied on the paintings. And the Indian hot climate, the shellac oxidized and made the change to orange color. See that yellowish orange color. So the inside painting, what you see, this is a beautiful painting inside, but the top of shellac it has converted to and masking the original color. It is masking the original color, and you cannot see the original color. And I don't know for what reason they have applied so much of shellac varnishes to all of the caves at Ajanta, and now it is very difficult because the shellac application of shellac is just like skin burn. Whatever you do, but still some traces remains, and it cannot remove it properly. And that also, if you use lot of chemicals to that, then the chemical itself damages the paintings. So that what Archaeological Survey of India is doing, the removal of this shellac, which has been applied in 1920. And here at my right side, you see this is the oldest of the paintings at Ajanta. This is the oldest of the painting, but here you see, are you able to see some painting? Nothing you can see. Why you are not able to see? Because this is the oldest cave number 10 Hinayana painting, which is 2,200 years old. This left side is 1,500 years old, but this is the 2,200 years old. And here what happened when the caves were discovered, many people they came, the Britishers wanted to take away this painting to their countries, and then they were successful to remove a 5-head figure and they auction it in England sometimes. But here most of the things, because the road was from Ajanta to Bombay, because from Bombay it used to go by ship at that time. So it was not good. Everything, whatever they used to cut it, getting powder. So they thought of that if we go cut it and take it, they say everything will be powder. So they started one thing, applying some varnishes and copying this painting. Is apply some varnishes and copy, because at that time light was not there. It was dark, very dark. A lot of bats were there. They used to burn the big oil lamps inside. And they used to apply the varnishes, and once you apply the varnishes, the color brightens. Then again they used to copy it. So like this, they have so many times they copied this painting. And just I search out the history, how many group of people they came to Ajanta to copy this painting. There was 16 different group of people they came to Ajanta, and they copied the painting. But this is the क्या बोलते हैं कि अजंता श्रापित है. Those who have tried to destroy Ajanta paintings, they never lived a beautiful life, a comfortable life. So all the paintings which they copied and displayed in the English Museum there in England 2 times. Twice it got fired, and only Ajanta painting was burnt. Twice Ajanta painting was only burnt, no other paintings burnt. Ajanta painting were displayed along with other paintings, but only exclusively 2 times Ajanta paintings were burnt. And then Japanese, they took some copies, it was destroyed in the earthquake. So that is why those who tried to destroy the Ajanta painting, they never lived a comfortable life. Now the 16 people, they have come, they copied, and you can see that what is the position of the painting. You cannot see anything. And you see that this is cave number 2. You see the beautiful strips. I don't know why they have left it. How beautiful it looks when it is not shellac. But side by this strip, that both the things have been shellac. Both the side have been shellac varnishes have been applied, and see how that looks. It is not, you are not able to see the original color, actual color of the painting. Because the shellac has oxidized, but in between that strip they have not applied any shellac, and see how beautiful it looks. So that thing has happened. That's why already that many of the Ajanta painting has masked, not able to see properly. We are not able to see this thing because of the shellac. So this what we did is to removal of this shellac. You see that cave number 2 medallions. This is the shellac we have left. We have removed the shellac to
bring out that original paintings, and we have just left a strip that to show it that how it was looking actually originally how the select was. And this is a very difficult work because you cannot use any water-based solvent, so you have to use methanol, ethanol, ethoxyethanol, like this, all carcinogenic chemicals, very carcinogenic chemicals. So you cannot work for a very long time because in the poorly ventilated caves there's no much of the air circulation. So you have to work, we should work 3-4 hours like this, remove the silicon like this, because this is very carcinogenic chemicals. You cannot use any water-based solvent, otherwise the pigment itself will lose. Pigment has got glue. Pigment has been mixed with the glue, and glue is soluble in water. So any water-based solvent cannot be used. This is the end portion of cave number 17. You can see that because cave number 17 was under worship at that time, and they used to burn the oil lamps and incense sticks. All the monks, those who were staying by the side of the cave number 17, they used to come in cave number 17 for worship, and they used to burn incense sticks and lamp, and all the soot had deposited in the on the painting. So this is the soot we have removed and exposed the paintings in cave number 17, one wall. So this is again the cave number 2. Somebody was cooking outside the caves, and the smoke used to enter through the door, and some you can see here that some soot has deposited on the paintings that we have removed, and the white portion on the top you are seeing, this is not a lime white, it is a kaolin white. Kaolin white, and as you know, kaolin, if humidity, it gets humidity, this gets swelling very quickly, and the contraction expansion, when the summer, it contract also very swiftly. So with this contraction and expansion make the pigment to fall very easily. So wherever the kaolin white has been used, this you can see here that the top, the how it is falling, the kaolin white, because they are not very much sticking to the surface. Clay is very hygroscopic. So this is the removal of soot. All the ceiling of cave number 2, we have cleaned it, removed the soot, and then 0.25% of polyvinyl acetate we have applied that because the white pigments, they are not should stick to the surface, it should not fall, and it is holding very good till the. You see that green color, beautiful green color, and socks you can see here that 1,500 years back also people were using different color of socks. So don't say that it is a new fashion of putting socks. Our people were using it, and see that he is drinking with a very happy face, and the green color you can see how beautifully one man is dressed in green clothes. This is how we have removed and exposed the paintings inside, that remove the soot, and this white pigment, white portions, this is falling grain by grain, that we have consolidated it with the 0.25% polyvinyl acetate, a consolidant which makes the pigment stick to the surface. And this is the condition for cave number 10 at Ajanta when it was discovered. That in front of cave number 10, that there was a big chunk of soil. It has come in front of cave, and the rainwater which was coming from the hillock, it was supposed to drain out in the Wagura river. It was moving inside the caves, inside the cave number 10. So cave number 10 was, and all the pillars in cave number 10, you can see that all the pillars, it has fallen. Everything fallen inside the caves. On top of the cave number 10, you will see that wooden ribs, you can see that just we have made it. There is still indication of wooden ribs on the top of cave number 10. All the wooden ribs also have fallen inside the caves. So the 6-7 feet deep mud with the stone blocks, with the wooden ribs, everything was there, 6-7, and the stupa itself is in very bad condition. It has and all the paintings up to 6-7, and this is the oldest of the Ajanta caves.
This is the oldest of the 2nd century BC caves. It is older 2,200 years old paintings at this cave. And afterwards, the next, they excavated initially the 5 caves, cave 9, cave 10, cave 12, cave 13, and cave 15A. These 5 caves were excavated 2,200 years back. And then again, there was a gap of 500-600 years. And no, Ajanta was abandoned, and what happened, we don't know. And again, the next excavation took place in around 4th century, 4th, 5th century. So that so much of 600 years gap was there. And then the cave 10 conditions, this is the condition of cave number 10. And all the side wall painting, which is the oldest of the painting, that has gone. So now cave number 10 looks like this. Cave 10 now looks like this. This is beautiful, the paintings you can see. It is the conservation work from the Archaeological Survey of India. In, I think they conserved 72, 75, 80, they did a lot of. And then you can see here that top painting. Top painting, I told you that 16 different type of people, the 16 different type of people, they came. Because inside it was very dark, they burnt a big oil lamps, they applied some varnishes, and they made copies and took it to their country. So like this, 16 people, they 16 different group of people, they came, applied their own varnishes, made copies, and that smooth dust and dirt and everything, all deposited now on top of that, which is holding the finest and the oldest of the Ajanta painting. This is a 2nd century BC painting. Nothing is seen. Nothing is seen on top of that painting. And when we cleaned all those whatever they have applied, the soot was there, so many varnishes were there, all varnishes, all the soot, whatever the dust and dirt which has accumulated, everything, when we cleaned it, we got such a beautiful 2,200 years old paintings inside, from this inside. So that is, see how beautiful that, this is the, you can see how there are, see the different types of turbans. If you, today you are asked to tie the turban, the 1st and 10th will be the same, because you don't know more than 10 types. I don't think anybody can tie. But in this cave, there are more than 100 different types of turban, all turbans tied differently. So this is the soldiers, you can see that king soldiers, and you see that these paintings we have almost discovered it from the paintings on top by cleaning, by scientific conservation. So from here to, you can see here the many, I think that I think 6 to 8 square meter painting we have cleaned. It is very slow work. 6 people, 1 day, 1 square inch. 6 people, 1 day, 1 square inch. So this is a very slow work. Slowly we could remove, and this is such an ancient painting, we could expose it. You see that aging, we have done very fine aging, because already if you don't aging, this is the lime aging. With the lime we have done. If you not done that, everything painting would have lost. You see how that pigment layer is coming out. So in that layer, we have injected some lime and fix it like that. After fixing it and after aging, we cleaned it. So now the painting looks like that. This is the king, and you can see here that red color lower lips. Red color lower lips, because don't say that lipstick is new to that. At that time, 1,500 years to 2,000 years back, gents and ladies and gents both used to apply lipstick at their lower lips only, not the upper lips. You can see here the king has applied lipstick at his lower lips. So that was very difficult work, very slow work, difficult work. I think in my 11 years of posting, I did, I think 780 square meter painting. We could clean it. Myself, my team had 6-7 people. We always used to do this work. But there is still a lot of work to be done.
So you see that how much soot was there, how much dirt and dust was, shellac varnishes were there, and that it was removed. It was cleaned and got it like this. You see that beautiful. This is the down and down the man was the folded hand down that 5th century intrusion. That sub 5th century when the monks left, that when the nobody was there to sponsor the Ajanta, so monks they had some money and they intruded at different places. So below the hand, folded hand, you can see some monks have intruded into that. And because this flora design is not in the 2nd century BC, this is the 5th century flora design. So the monks, they intruded at different places at Ajanta, and that they created their own paintings, which has nothing to do with the original style of the painting or the original story of the paintings. So this is the intrusive painting, but on top of that, this is the beautiful eyes to see. The 2,200 years old, that painting with the beautiful eyes, you can see that. And everybody was putting yellow ribbons in their neck. And he's worshipping the stupa. So how you use to clean? Because inside nothing is seen. That what is inside is there, because this is the painting on top of it, and inside nothing is seen. So you use very focused light, very with a lot of optical microscopic, lot of so that simple things we can see it in a bigger way, and that way we use to first make it a diagram how the inside figures looks like. So now I have with that optical images we have made this diagram. So from this painting, so I know that where are the figures, what are these figures inside this painting, and then once it is known, then we can use to catch from the feet part to the top. Don't clean it on the face first. The face was the last option. Slowly from down to top you use to move. And this is again a 5th century painting from cave number 21. You can see that again the red color leaves. And then this is because of that, you see everything is coming out, bulging is there, that there is a crack formation is there inside the painting, that everything has to be, that it is on the lime plaster, so it has to be, lime was injected into that. And then everything was fixed first, and after fixing it was allowed to dry for many months. And once it is dry, then slowly we started cleaning all those, because it is also got some shellac varnishes applied to that. So that body, and now the figure looks like this. Now there is no, at least there is no danger that further loss is not possible to this figure. And like this many figures are like this. This is around 3 meters wide panel. So that everything we have cleaned from cave number 21. This is again from cave number 21. Then if you look to the how the earthen plaster was made, we have analyzed I have analyzed that and published paper also, that earthen plaster of Ajanta, Ellora, Karla, Bhaja, Pithalkhora, Aurangabad caves. And you can see here, this is what it indicates, that local soil from the Waghura river, from the bank of the Waghura river, it was taken for making the plaster. And then you can see here that you could look to the calcium oxide and magnesium oxide, 9% and 3%, 9%, 4%, 7 to almost it is, you can see it that 14-15%, because the soil was not very not holding properly, it was not binding properly. So at least 15% lime was used into the soil. 15%, about 15% lime was used into the soil, and then some organic additives, some starch paste, some seeds, some leaves. You can still see some plant leaves and some seeds mixed in the earthen plaster. So those things were mixed in and then the earthen plaster was prepared and used.
This gives a rough estimate how the earthen plaster, what is the composition of the earthen plaster, and it clearly shows that there was a lime up to 14-15% lime was additionally mixed for the additional binding, because that soil was having not much of the clay. It is 16-17% of clay only. So it was mixed lime so that it is get a good binder, and some organic additives, organic starch paste were used. So if you see to the particle size, what are the size of the particles? So there is at around the 15-16%. You can see here that the slit is there, so clay superfine part. 15-16% clay is there, and there is a big proportion of silt. Clay is the binder, but silt is not a binder. And some percentage, 10-15%, 10%-15% sand particle is there, sand size particle are there. So this Ajanta paintings, whatever that plaster, mud, earthen plaster they have used, it is a very superfine. It is a very fine particles plaster, because it has got 15-16% of clay, which is superfine, and it got also that around 60-70% of silt. Silt is also very fine particles, but bigger than the clay. So those things, those type of particles, that is why very compact structure we get. In that one, they have mixed 15-16% of lime, and then they got a very good plaster. So Ajanta plaster, out of this, all the plasters what we show in Karla Bhaja, the Ajanta plaster is very good, and that is why it is surviving very well. If you put it that what type of soil, it is the silt loam. Silt loam soil has been used to make the Ajanta plasters. Even the Waghura river, which is that also silt loam. And then we did that petrological analysis of the plaster. This is all the minerals we found it, that what are the minerals are there. The pyroxene is there, some were in the modern traces of plaster appears to be high, because the modern conservation where they have used plagioclase. This is the feldspar, all these things. This all indicates that this is the soil derived from the basaltic stone, weathering of basaltic stone. And then what are the ingredients? What are, because plaster जब आप सीमेंट बनाते हो तो उसमें सैंड मिक्स करते हो 1:6, 1:5. So this earthen plaster is also mixed by adding some aggregate, some sand. So then what we did, we dissolved that mud plaster into dilute HCl, so that clay, that lime will get dissolved and everything separated, and then we just filtered it out, and aggregate we have dried, and then we separated the aggregate, what type of aggregate it was used. So these were the size of the aggregates. Different size by aggregates were used in the for making the Ajanta plasters. So these are all, these aggregates are of different sizes. You can see some very fine, some coarser, some further, some very gravel type of things. But you just see at number 3, all are from the basaltic weathering of basaltic stone. These are all the aggregates. But number 3 is very white. And this number 3, this is the, when we identified it, when we tested it, is a calcium silicate. Calcium silicate is nowadays that ladies, they put rangoli in front of their houses. Previously, they used to use rice paste, rice powder. But now no one is putting rice powder. Rice powder was a very good thing, because the ants will not enter your house. Because when you even you don't you yourself are feeding, but you are feeding the insect also. And this was very good religious reason why that rangoli was used. And rangoli was used not for the decorative, but it was used actually that religious factor was there. It was a rice powder which was a food for the ants or insects. So people had the thought that not only we are satisfying our stomach, but we are also feeding to the insects also. But nowadays that India has become poor, and we have moved to number 3. This is the calcium silicate. Calcium silicate is very hygroscopic.
It absorbs moisture. So you see that if you go to the Mughal monuments, many of the Mughal monuments, you see that if you go to Bibi ka Maqbara or some Mughal monuments, somewhere, everywhere, you will see that a water source. वाटर सोर्स इफ यू गो टू दैट इज देयर यूज्ड टू बी जो फव्वारा काम करता था यहाँ पर भी बीबी के मकबरे में एवरीवेयर विल सी दैट दैट वाटर फाउंडेशन इज देयर वाटर जो है दिस थिंग वाज देयर तो व्हाई बिकॉज द मॉन्यूमेंट गेट्स सम वाटर where some water some moisture around the surrounding of the monument is essential for the survival of the plasters. So Ajanta people, they were knowing that this is a very dry area, and if the heat is there, this will desiccate the paintings. The plaster will desiccate. It will when the plaster will desiccate, it will make a crack inside. It will crack. So they were knowing that agar extreme heat is there, this will desiccate the earthen plaster. So they also mix that calcium silicate. They mix calcium silicate. Then this calcium silicate, it maintains certain quantity of humidity inside the earthen plaster and did not allowed it to dry, desiccate. So that's why the life of the plaster is more. This has not been, this calcium silicate, I have not found applied in any other cave plaster except Ajanta. So this is the shift that we have tested the calcium silicate. This is the with the instrument that what is this? This is the silicates that everything we have tested it. Then I am whatever I have calcium argillate. This is that whatever the organic additives they have added, they are changing to calcium argillate, kaolin, silicate. So everything what I am told you, this is on the basis of. This is the some NH band, means some organic additives have been used in the earthen plasters. And this is zeolite calcium silicate. This is the testing by calcium silicate. This is zeolite which has been used in the. So how to make a plaster? How to make a, now I know the composition of the Ajanta plaster. I know what are the components used, in what quantity they have been used, everything was knowing. So we made that because prior to me that they were the filling of the gas, whatever the aging or filling of the gas they used to use with the plaster of Paris. But this was plaster of Paris very dangerous for the conservation work. It should not use that plaster of Paris. That plaster of Paris nothing but the gypsum, जो आप घरों में डिजाइन वगैरह बनाते हो. So that I promise that I made it that I will replace this plaster of Paris with a suitable thing. So I started making earthen plaster and lime plaster, and fortunately I was successful in making good lime plaster and good earthen plaster also. So this is where I am making earthen plaster. I am seeing these are the plants which I collected from the jungle of Ajanta caves. इसमें gum is there, that eatable grums that ladies जो खाती है ना after delivery. So this eatable grums are lot many eatable grums. They are exported from Ajanta itself. It goes to different. Ajanta is a very good producer of eatable gums. And then that मुरत का दाल, बेल and all those things. मराठी में बोलते हैं ये काट शिवरी का छाल. Cut shiuri ka chal hai. I don't know that much this thing. And then everything we have crushed these organic things. We have crushed it and tied in a cloth. This is the cloth that we have tied in the water and for months together till it gives a very bad smell. And this is the soil we have collected from the side of the Waghura river. This soil we have collected. In this soil we have also added 15% of lime. And then this water was poured into this soil to make the plaster. So like this, the plaster was made. And then we have applied on the cave number 15. If you in the some cell, if you still go, you can see that where we have worked out the plaster, other plaster parallel to this.
And then now that whatever that filling is there, now we are doing with where the lime is there, we are filling with the lime. Where the mud plaster is there, this is the lime work. This is painting done on the lime, so we are filling with the fill all those things with the lime. This is the mud plaster, where the painting has been done in the mud plaster, so we are filling all those gaps with the. This has been filled with the mud plaster. So around, I was there for 11 years, around 80% of the Ajanta painting, I got it consolidated. Further loss will not be there. 80% of Ajanta painting, if 100 years nobody worked, then also there nothing will happen. The 80% of paintings, I got it consolidated in my period. And sometimes it hangs, the painting hangs after any season. Sometimes we go on knuckling everything to that whether some, because we just check it that no painting has a gap has not formed between the painting and the original basalt wall. If something is that gets a different sound, and then we apply mix some, inject some chemicals and apply jack and leave it for 15 days with the thick foam, so that no damage is done to the paintings. So that leave it, and after 15 days we remove it and just get it fixed. And then this is the that is a thing I started in the year 2003 at Ajanta. This is it was I am the first man in India and first and last man also, because when I left Ajanta, when I retired from Ajanta, left Ajanta, then this technique itself is stopped. Nobody is working on this technique. But this is in my period, all the Ajanta sculptures I consolidated with this technique. So what is there in the bottle? This is not the saline which we give to the patients. It is in the bottle. You will see that ethyl silicate. Ethyl silicate means silica dissolved in alcohol. Of sand, pure sand dissolved in alcohol. Of sand to alcohol में dissolve नहीं होगा. But if we make the sand, the nanoparticles of the sand, and pure alcohol, 99.9% pure alcohol, with the high pressure and temperature, with high pressure, some catalyst, around 20 to 30% of silica can dissolve in alcohol. That we are getting that what is called this chemical we are getting from Germany, and we are diluting it. This is called ethyl silicate. So in the bottle we have removed the saline and we have filled it with the ethyl silicate. So ethyl silicate is going slowly. It is just like water. Ethyl silicate is just like water. And in the cracks, I have left it with the needle. So it flows slowly into the cracks. And once it goes inside the cracks, this is the silica, pure sand dissolved in alcohol. Alcohol immediately evaporates. And what is left inside? It is a silica, sand. And sand is the natural binder of all rocks. So I am doing that, producing silica inside, sand inside, and sand is a very good binder. It is very hard binder. So the solution is going inside, alcohol is evaporating, and sand is left inside, and that is consolidating the sculptures. In this way, almost all the Ajanta sculptures we have consolidated. But the problem is there that this chemical has to be, because Ajanta is very hot. So this chemical very well works at the 18 degrees centigrade, but it is very difficult to create that much temperature. So we used to, wherever that is, we used to surround it with the plywood, scaffolding with the plywood, then some cloths, white clothes, then some water cooler, some bucket of water, and then you have very small door to enter inside, so that we can maintain a temperature inside around, because Ajanta is very hot in the summer. Very hot in the after monsoon, it is very hot. So that we used to maintain, you could maintain up to bring the temperature up to 25 degrees centigrade. For a lot of chemicals, because it comes very expensive. This comes more than 1300 a liter. So, but somehow we could do it. So many sculptures, almost all the sculptures of Ajanta we have consolidated by this technique. So you can see that
This is, and we don't do, because archaeology does not allow me to, does not allow us to reconstruction. It only says that whatever is there, you make it safe. Make it so that head was coming out. When I went there, the head was coming out. So everything consolidated, but not beyond that. What that ASI does not allow. What we have to work in the within the lines. So that much we now the concern, there's no problem. This work I did it in 2003, 2002, 2003. This work we started, and for many years I did it, and almost all the Ajanta sculptures I have consulted with this technique. You see, because when the basalt starts weathering, it is weathered 10 times faster to a granite. क्या चाहिए? Hello. Any problem? कुछ प्रॉब्लम है आपको? हेलो, देखिए कुछ बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम? Sir, there is no problem, sir. Continue, sir. कंटिन्यू? Yes, sir. पता है मैडम? क्या सर? आपको समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ उसको? बहुत अच्छा सेशन है, और आपने जो वर्क किया है तो वो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ फिर आगे? नाइस वर्क सर। जी सर। हाँ, ये बेसाल्ट जो है, व्हेन ये जब स्टार्ट होता है तो व्हेन आई वाज पुटिंग हैंड टू दैट बुद्धा के हैंड पर लगाता था तो इतना सारा पाउडर निकल के आता था यहाँ से, बिकॉज आई टोल्ड यू द बेसाल्ट, एक बार वेदरिंग का प्रोसेस बेसाल्ट में शुरू हो गया तो इट वेदर्स 10 टाइम फास्टर टू ए ग्रेनाइट। तो अगर मैं इसको, एंड देयर आर सीरीज ऑफ Buddha, some 10-15 Buddhas in cave number 19 in front of same type, which is designed same type of Buddha 15. So I know the design of this Buddha, and I have to consolidate these sculptures. I don't know why this is powdering so much. So we, with the ethyl silicate and ethyl silicate paste, stone powder, I have purchased a machine which can get the stone powder. Lecture. I have a machine to prepare the 100 mesh, 200 mesh, 400 mesh stone powder, and with that and mixing with the ethyl silicate and making a paste with that slowly with the saline. I put some for many days, then again consolidated it. Then with the paste I made these fingers and all those things, and it took one sculpture. It takes almost 6 months to expose to the sunlight. So slow work, but it is very good work, that it works very well. You can see here the close view of how that hand was there, how powdering it was there, and now the hands look like this. And then you can see here that inside that complete the hole from the on top, and the face was also coming out. This is another image, but that leg, you see how bad is there. So that was also consolidated. This is the image I consolidated on the request of my colleague, Professor Walter Spink, who has worked for more than 43 years now. He's no more. So there is 2 elephants in front of cave number 6. One elephant on the side on the main door. The one elephant already reached and gone, lost. But this was also about to lose. So I consolidated it with the same technique. And now it's a beautiful elephant. It is looking so beautiful. And then you can see some pillars over here, that some pressure is falling, and that stone is coming out. This is the cave number 7 pillars. One of the pillar in cave number 7, the same. You see the multiple cracks and all those things. Okay, if not considered, it would have crumbled. So now what he did, this has expanded also. The pillar has expanded also. So then what he did, because it has got some paintings, so we purchased some foam and some aluminum ribs we made, and we made it that I can tighten it because it has expanded. During the conservation I can tighten this pillar. So
so that it can, and then we whatever inside lot of stone dust was there, that we remove that air blower, and then ethyl silicate and stone powder, ethyl silicate, stone powder, ethyl silicate, stone powder. For it took 3-4 months for us. It is inside cave number, and that we could consolidate it slowly. So now the pillar is now it looks like this. If you go to cave 7, you can see. And this is another pillar from cave number 21. You can see here where we have also put some steel clip so that the things that does not move, and that is steel rod we have clamped it so that this also goes inside the outfilling and nothing moves out. So this previously it was a cement plaster. People at that time they use cement and fill it up. Cement is very dangerous for the stone. You should not never use a cement. And see some part on the top of this thing missing. It has fallen. So what we did is that we removed all the cement, put some steel clamp into that, and started pouring ethyl silicate and stone powder, same stone powder. And this piece was missing, that I got a piece from the Waghura river down and got it made like this, and glued it with the epoxy, because it is inside. I can use epoxy. The epoxy se glue karke that we have made. Now you can very difficult to say which one is new, which one is old. And this because ethyl silicate comes very expensive. It is 1,200, 1,300 rupees 1 liter, and lot of at least 25-30% it evaporates. It does not come in our work because of the hot season at Ajanta. So a lot of work I did with the lime. This is this whole things in the, it is very big. It's got the outside cave number 19. That whole base was itself removed, and that part has lost from the top. That is a very big Buddha. It is almost 7-8 feet thick, very big Buddha. So everything, this thing you can see that I made it, everything within the base and everything. This was restored in lime. I know very good lime technology. And then all the gaps and cracks through which the water was coming into inside the caves, all the gaps in front of the facade, in front of the caves, the facade and the side wall, and wherever the gaps were there at Ajanta cave, everything I got it filled with the lime. So this is the lime filling in that one, so the water does not enter inside the caves through this gap. And then some whitish secretions were there. This is cave number 4, inside the cave number 4, which was again the paper pulp technique. You must have seen in the discovery this thing, that this were cleaned with the paper pulp technique by using ammonium carbonate, ammonium bicarbonate, some EDTA, some carboxymethyl cellulose, like this, mix it, and 15 days further we applied the paper pulp and then wetted it, and then afterwards removed, and everything removed. I just left it little part not clean to show that how it was originally looking. And then we did very good very good photographic survey, because I was sitting, this is I am talking, I was 2002 to I was there from 1997 to 2008 at Ajanta Caves, and at that time we are sitting a very remote location, very away from Mumbai. So for even the computer was not very accustomed, and at that time we don't have computer also. So everything, this thing I used to rush to the Mumbai and get it, people, hired some people to do some work. So what we did that tomorrow somebody said that what was the problem in the sculpture? So why you have consolidated? Somebody questioned this. So I got it made in this thing that for all the sculptures what we have consolidated, that we have in the things, if you see, then I kept in the office that if you put on cavities, then only cavities will be seen. Put on exfoliation, so everything I made a good documentations of the things and kept in the office.
like this, everything was documented wherever I have worked. That the documentations, because tomorrow if somebody wants to see somebody that what was the problem, at least he can make note of this. So whatever the sleeping butha, many of you must have gone to the Ajanta, that वो नाक आप देखते हैं, नाक ये सब जितना भी yellow, this they all are cement. Don't say that it is stone. They have because the cement is inside, nothing is happening, because this all has been reconstructed with the cement long back in somewhere 70, 75 something. And this is we did 3D 3D photography with the help, because I was coordinator for the Indo-Italian team for the 3 years at Ajanta. So this thing with some Italian people, 10, 15 Italian people, and our team at Ajanta, we have worked together, and for the conservation of cave number 17 paintings. So this is the documentation for cave number 7, how it looks. And then you can see that I don't want, because you see that many people, not more than 40 people, but there are 100 people inside the caves. Then temperature inside the caves is 27 to 20. The temperature does not change at all. It is a very static. The temperature does not change, but humidity, lot of changes is there. This is the carbon dioxide at my period that it has. This is the yellow is showing number of visitors, not more than 40. But how many visitors? At that time, 100 visitors was there. Yellow line shows the visitors. You see, not 60 visitors तो 5:30 के बाद भी नहीं हुआ. 5:30 के बाद ही 60 फीसद मॉर्निंग से ही शुरू हो गया, एंड नॉट मोर देन 40. बट 40 कब हुआ? 6 o'clock. But so much of visitor to carbon dioxide, which is supposed to be, when this is the value on Monday, 38%, 37, 38%, less than 38%. It is on Monday when the caves are closed. And now because of the human exhalation, because somebody climbed the rock and the half karke, all carbon dioxide they live in the caves, and the value has increased from 38 to almost 43, 44. So 7-8% increase of carbon dioxide because of the human factor. And you know the carbon dioxide is one problem, because humidity is there. Carbon dioxide can react with the kaolin white, changing it to calcium bicarbonate, changing to calcium. And once the kaolin white, calcium carbonate changes to calcium bicarbonate, it loosens and falls. And that is what is happening at Ajanta caves. So people that don't understand why the person sitting on the gate, he will restrict the people, not more than 40 people, but very difficult to control them, because big line is there in the very hot sun. So what ASI has done, that in some caves that they have previously all caves were not illuminated. Every cave is now illuminated. So there people can, and they have made the causeway in front of Aghuda River. Somebody can start from cave 26 to 1. Somebody go from 1 to 26. So visitor distribution is there. But Indian mentality is the same, that they think that 1 से 26 तक जाएंगे तो कुछ स्टोरी मिलेगा, 26 से 1 तक आएंगे कोई स्टोरी नहीं मिलेगा. But this thing has nothing to do with the story, because every cave is different. So that still people rush to the cave 1, cave 2, and lot of rush is there. The carbon dioxide, you see that from 500 ppm on Monday, it goes up to 700, 750. When now the visitors have doubled. This is, I am talking, this is something 2002, 2003, but now the visitors have doubled almost. So this value has crossed the 1000 ppm. It is 1000 to 1100 ppm. So this is the causeway. You can see that Ajanta causeway they have made. Somebody can go from 26 and come like that. This is the sound level. Sound level in the very silent zone, this should be around 50 or something like that. But you see here 90. 90 is just Bombay club and night club. Some people they come, and this noise level, because it's not one day noise, this is the daily noise. So that creates the vibrations and loosen the pigment. So then we have also documented everything at Ajanta. So I think I will
like to end the things, and if you have some questions or something, you can ask me. Some questions are there, you can ask me. Sir, very good evening, sir. My name is Dr. Gangu. Sir, I have still one doubt, sir, and even still no one answered this one, because nowadays we are using more technology to construct the buildings and bridges, irrigation projects, and everything. And as you said, when you have seen the all the temples as well as construction, everything, then I don't know still what technology they used to construct all the things. Yes, as you said, you have said clearly. You said everything. The thing is that what technology they used when you come to the Andhra Pradesh here, Lapaksi one temple is there, sir. As you said, it was unique temple. So still I have doubt how in those days, 5 years ago they constructed this temple, sir. So still people are not able to find out that how they constructed. No, because see that if serious research koi karega na serious research, if someone wants to do serious research, I have seen, I have gone, previously I was posted at Hyderabad. So I used to work at Lepaksi also. So I know that temple very much. I stayed at once 10-15 days to beautiful paintings also there. But the thing is, unless until I did at Ajanta Caves because of my interest, and I stayed here for almost 15-16 years, and that was a fashion for me. Today also I do a lot of research work. I have 142-43 research papers published, and my 90% of papers I don't publish in India. This is in the foreign countries. Still, I am doing a lot of research. Lepaksi is the place where you can wonder, you can create. This is such a beautiful temple, beautiful. So many things are there that paintings are there, the pillars are there. That you see that pillars how they have constructed. But thing is, serious inventor should be there. Somebody should take it like that. Otherwise, that how is it possible? Sir, you won't believe that 3-ton stone pillar. It is standing on air. Still, we are, when you visit the temple and everybody see that one, sir, that was miracle. Then we don't know how it was. Someone should seriously research to it. It's not like that you cannot find it out. We have so much of techniques, so many these things. I am telling it till that. I will give a lecture that to you till that we are thinking that only organic additives, some plant ka seeds and some dal diya. But now what I got from these caves, I got that wheat paste, rice paste, moong dal paste also has been mixed into that. Nobody was knowing. So unless until you do serious research, that Lepaksi is not a big thing, that it's such a beautiful and some even pigments. I am telling you that so far the people have not analyzed the pigment of Lepaksi, what pigment they have used. And pigment itself will differ, how the material they have prepared, what are the that all granite stones, how it is working, how. So that means I am telling you that unless until some serious research is there, nothing will happen. And is in our country the people talking में रहता है, ज़्यादा कुछ research करता नहीं. Thank you, sir. Thank you. Okay. Any questions, friends? So, okay. I think this is all what I wanted to tell. Thank you very much. See you most probably tomorrow, 3 o'clock. Okay. Tomorrow, 3 o'clock, we'll have another lecture on organic additives in these plasters. Yes, sir. Thank you, sir. Roll of 25. जी sir. Vote of Yes. thanks. Yes. Good evening to all of you. Myself, Dr. Koshish Pathak. It is my pleasure to propose a vote of thanks at the end of the session. First of all, I would like to heartily thankful
the invited respected Professor Manager Rajdev Singh sir, who gave a very valuable, informative and interesting lecture. We all get to learn and understand something new from the explanation given by Professor Rajdev sir. Thank, thank you very much for that. And I would also like to thank UGC, HRDC, MMTC, PAMU, Sambhaji Nagar, from Director Dr. Mahajan sir, Course Coordinator Dr. Madhuri Sawant ma'am, and Dr. Rapesh sir, and all technical team. And finally, I would like to thank all the participants who listened this session even more interactive and rich with their meaningful questions. Once again, I am very grateful to all of you for participating in this session and making successful. I hope that whatever we have learned today will be useful for use in the future. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Pathak ji. So much thank to you. Thank you, sir. Yes, thank you.